Hello, and Assalamu alaikum ji. I would just like to take this opportunity to welcome you in this series of developing capital markets in Pakistan. It's an initiative taken by the CFO Club, and we are going to have more. Thank you, audience. I think we are having some technical issue on from Imran's side. So we will wait just when he comes back and join again. So guys, thank you very much for joining us today. And I would like to welcome you in a session developing capital market in Pakistan. It's a part of a series which ACCA, CFO Club and PSX will be running in next couple of weeks, as well as we will keep engaging more and more people to really create certain awareness what's happening in a capital market and why more and more people should contribute in that. Just giving you one example, I love that example. जब आपने छोटा सा एक पत्थर उठाना हो ना, तो आप एक हाथ से उस पत्थर को पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. और अगर आपने थोड़ा सा बड़ा पैकेट उठाना है तो शायद आप दोनों हाथों को इस्तेमाल करेंगे और आप उस पैकेट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेंगे. लेकिन अगर आपने कोई बहुत बड़ी चीज मूव करनी है तो आपको बहुत से हाथ चाहिए. सो इसी तरह जब आपने एक छोटे से विजन पे काम करना है और आप एक स्टार्टअप हैं, तो शायद आप अकेले एक सर्टेन स्टेज तक आ जाएंगे. जब आपने ग्रो करना है एंड यू रियली हैव अ बिगर विजन, तो फिर आपको बहुत से हाथ चाहिए, बहुत से लोग चाहिए जो आपके साथ मिलके चल सकें. और यही फिलॉसफी है जिसपे ACCA, CFO क्लब एंड PSX इस वक्त काम कर रहा है कि सारे लोग कोलैबोरेट करें और वो अवेयरनेस जनरेट करें कि कैपिटल मार्केट किस तरह डेवलप होंगी, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा आवाम को भी इसमें शामिल कर सकें, बिजनेसेस को इसमें ला सकें और उनको एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म दे सकें जहां पे वो उन सवालों के जवाब दिए जा सकें जो जनरली लोगों के पास जब वो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उस तरह के सवाल होते हैं. कैपिटल मार्केट इज वन ऑफ अ फॉरम जहां पे आप एक बहुत सबसे पहले तो आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को जो है वो हैंडल करना पड़ता है कि बहुत सी दफा जब बिजनेसेस ने ग्रो करना होता है तो उनका ख्याल होता है कि वो कैपिटल या तो ऑनर दे सकता है या बैंक दे सकता है. और बहुत दफा हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में एक फंक्शनल कैपिटल मार्केट अवेलेबल है, इक्विटी की फॉर्म में भी और डेट की फॉर्म में भी. और ये एक ऐसी मार्केट है जिसको हम प्रॉपरली लेवरेज कर सकते हैं. और यहाँ पे अब कैपिटल मार्केट बजाते खुद स्प्लिट हो गई हुई है दो एरियाज में, जहां पे आपके पास मेन बोर्ड है और आपके पास एक जेम बोर्ड है या आपके पास स्टार्टअप बोर्ड है जो छोटी कंपनीज के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है. सो आपको उस लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना पड़ता है कि आपकी ग्रोथ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो किसी किस्म के हिंड्रेंस जनरेट कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी इससे ज्यादा है और कैपिटल मार्केट वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड भी कर रहा होता है. दूसरी चीज, वी हैव टू गो विद द इंक्लूसिव अप्रोच. सो इंक्लूसिव अप्रोच एंड डाइवर्सिटी या DNI जिसकी हम बात करते हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, कैपिटल मार्केट ऑल्सो हेल्प यू टू रियली गो इन दैट डायरेक्शन. एक तो वो आपको कैपिटल रेज करने के लिए डेफिनेटली बहुत से मीडियम्स आपको मिल जाते हैं और बहुत से लोग फ्रॉम कैपिटल प्रोविजन परस्पेक्टिव आपके साथ ऐड हो जाते हैं. बट इसी के साथ आपके बोर्ड पे, आपकी डायरेक्टरशिप में, आपके साथ एडवाइजरी साइड पे इतने लोग आपको मिल जाते हैं कि आपको एक डाइवर्स ओपिनियन मिल रही होती है, रादर देन कि आप एक लिमिटेड बिलीफ में और एक लिमिटेड सर्कल में काम करने के बजाय यू बिकम मोर इंक्लूसिव एंड यू वैल्यू दैट डाइवर्सिटी. सो आज के सेशन में दो तीन चीजों पे जिस पे सबसे ज्यादा बात हो रही होगी वो कैपिटल मार्केट, व्हाट डज इट मीन फॉर द बिजनेसेस, जो रीसेंट सक्सेसेस हैं, जो रीसेंट चैलेंजेस हैं, जो ओवरऑल हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर या लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं वो क्या हैं, उसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए. पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट इज स्टिल, अगर आप देखें ओवरऑल इस रीजन में, तो वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स या नंबर ऑफ इन्वेस्टर है कंपेयर टू द पॉपुलेशन, दैट्स वेरी लो. सो एक तो डेफिनेटली हमारा एक रोल है इसमें CFO क्लब, PSX और ACCA का टुगेदर टू मेक श्योर कि हम इसकी एक अवेयरनेस जनरेट कर सके, एक फाइनेंशियल लिटरेसी जनरेट कर सके और लोगों को बता सकें कि कैपिटल मार्केट में किस तरह वो शामिल हो सकते हैं, इसके ग्रोथ में किस तरह शामिल हो सकते हैं और इससे बेनिफिट किस तरह ले सकते हैं एंड हाउ दे कैन रियली गेन और एंड मेक मनी आउट ऑफ दिस वन. दैट्स डेफिनेटली एक छोटा सा एरिया जहाँ पे वो पार्टिसिपेशन के हवाले से बात होती है. और दूसरा बिजनेसेस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ बिजनेसेस कैन लेवरेज PSX और द कैपिटल मार्केट टू रेज डेट फंडिंग और इक्विटी फंडिंग टू रियली ग्रो. और उसमें स्टार्टअप्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और बिजनेसेस जो बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं और एक ऐसी स्टेज पे आ गए जहां पे उन्हें ग्रोथ कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा फॉरम अवेलेबल है
जहां से ना सिर्फ कैपिटल रेज हो सकता है बल्कि बहुत सी एडवाइजेस और वो डाइवर्सिटी जिसकी अभी अभी बात कर रहे थे वो भी शामिल हो सकती है। सो अगर आपका विजन बड़ा है तो जस्ट मेक श्योर कि आप स्टॉक मार्केट के साथ और कैपिटल मार्केट के साथ इंटरेक्ट करें एंड देन रेज दैट कैपिटल व्हिच कैन हेल्प यू टू रियली ग्रो बिगर एंड फास्टर। सी पैक की जब हम बात करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे और कैपिटल इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी है। जो बिजनेसेस उस तरह के वॉल्यूम्स देख रहे हैं जो कि सी पैक और या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ओवरऑल हम इस कोलैबोरेशन में देख सकते हैं, या जो जितने कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं और जिस तरह के वॉल्यूम्स और एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट आती है डिफरेंट सेगमेंट्स में, तो वहां पे भी कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा एक सपोर्टिव फॉरम है जहां पे फाइनेंशियल नीड्स जो है या कैपिटल नीड्स जो है वो फुलफिल की जा सकती है। सो आई वेलकम यू टू टुडेज सेशन एंड आई इनवाइट इमरान अहमद, who is a CFO Agro Fertilizer, to take it forward in a panel discussion. So I hope you will enjoy the rest of the show. So stay connected and make sure you leverage whatever the questions you have, you keep sharing it. So thank you very much and welcome to the panel discussion today. Thank you, Sajid, for your input and thank you for your time. We will hand over to Mr. Shabar Zaidi for his comments. Bismillahirrahmanirrahim. I have been asked, thank you for CFO Club and ACCA for inviting me to talk about the developing capital markets in Pakistan. Let me first give my insight of what I have been doing in the capital market. I was the first director after demonetization for the Regulatory Affairs Committee of the Karachi Stock Exchange, then it was called PSX. And I was the person who basically compiled the book, which is the handbook of the regulations of PSX. This was actually compiled by me, and I have been the partner and the senior partner of the A. Ferguson and Company, and we were the auditors for the major almost 50% or rather 40% of the companies which are listed on the stock exchange. So that is another experience I have got. Then I was also the chairman of the Institute of Corporate Governance. Actually, I was the person who actually was the first director of this institute. And other opportunities I had to deal with the capital market. My first impression and my first concern about the capital market is that personally, and whether people must have read it or not, I have written an article on the downgrading by MCSI in the last fortnight. I am personally not very happy about the manner in which the stock exchange, the capital markets have been working in Pakistan, and I feel that there is a serious need to re-examine what are our basic issues. And I will just start by saying this, that the number of the participants has not increased, but rather I would say, I don't know exact amount now, the number of the participants has actually decreased in the last, I would say, decade. And the actually objective of the economic growth, which should have been there by the capital market, that has not been fulfilled in the tune it should have been. So the important part of the capital market should do in Pakistan is that they should be the place for the savings of Pakistan. They should be the conduit through which the savings of a country are routed to the industry. In Pakistan, very unfortunately, we actually, as a Muslim country, we save very less, and then when we save very less, the very small amount of that saving is actually routed to the actual industrial growth by the capital market, and there are reasons for it. And I have been constantly saying that directly or indirectly, expressly or by implication, we are actually promoting or trying to promote the capital market where the participants are more interested in the short-term gains rather than the long-term investments in the scripts. The free float of the shares which are theirs in the capital market are so less that MCSI
has to downgrade us because of liquidity and the size, and it is very unfortunate for the country like this. So we as a country have not been able to actually use the stock exchange or the capital market in the manner it should be useful for the economic growth of the country, and the money is not being channelized in the manner it should have been. There are people say that there have been a few successes. The new people have come in, and there has been a very large number of subscription. But if you look at the total new scripts which have come in, is not significant. And I am also privy to many cases. I would say I have done 2 or 3 major delisting in Pakistan. I was involved in the delisting of Lever Brother. Now I am involved in the delisting of other companies. So we have to decide that what is actually the participation of the capital market in the overall economy of Pakistan. So in my personal view, there is a very serious need, very serious need to look at the trends which are developing. And I am not a technical man in that side. And I say that when my grandfather was alive, he used to invest in almost any new script which used to come to the market. At that time, I am talking about 1970s and 60s. Now, I have been the senior partner of Ferguson, involved in the financial sector, but I have never subscribed on any share for the last 40 years ever. So why it is so? Because my mother is an investor. She has got some money for her retirement, but she will never invest in the stock exchange. For example, I am the trustee of many big trusts in Pakistan, the charitable trust, but we don't invest in the capital market because of volatility. So the volatility and these are the factors which should be taken care of. The second aspect, which is also very important, because now I sit on the boards of many companies, and I feel that the requirements and the compliances which are there for the listed companies versus the non-listed companies are so cumbersome and so voluminous that I don't want to enter into that kind of the regulatory atmosphere. I personally feel, maybe I am wrong, but I personally feel that we have been over-regulated as far as the compliance is concerned on the stock exchange side. There are so many compliances, and which compliances are actually there, but they are not. Because I sit on the audit board on many relevant companies, but these are all filling the form. That's all. So the question is, what is the real effectiveness of this kind of corporate governance and things like that? So I am very concerned about some fundamental issues which have to be settled in the corporate structure and the listing of the companies which are there in the stock exchange. So on the overall perspective, if you ask me whether I am satisfied with the capital market position at the point of time being, I say satisfaction is not the answer, but I don't consider them as a relevant player anymore. I would not consider them as a relevant player in the economics of Pakistan in any sense. Suppose the stock market goes up and the stock market goes down, and if I am the finance side manager in Pakistan, I will not give it much importance. Yes, people have been saying that yes, Pakistan is doing well, the capital market is going up and down, but really, in reality, it is very, but the potential is very high. The question is of the potential. If you look at the national savings and the kind of money which is there in the national savings, they are much in the overall term, they are much lesser than the return on the Pakistani scripts. But why we have to think seriously, why the ordinary Pakistanis who don't go to Whitehall Road or the stock exchange do not invest in the shares? This is a question to be asked. Why people do not. I will not advise my mother to invest in the stock exchange. I will not advise my trust which I am sitting, which has got billions of money, to invest in the stock exchange. Why? So this is the question. I am more concerned about the real life issue, why I do not invest in the shares. Because I am in this business for the last 40 years. I have been the director of stock exchange. But if anybody comes to me and say,
Should I invest in the stock exchange or should I go to national saving? I would say go to national saving. It is safe and you will sleep soundly. The question is why there is so much movement in the price. The reason is that that we have decided or we have done in the past one way or other things suitable for the trading. For example, let me say one thing. I personally feel the long-term capital gains should be exempt from tax. Long-term credit, long-term investment should be allowed credit to the person who invested. We give incentive for buying the shares. We should give incentive. Yes, you should. I will give you incentive if you keep that share for 10 years. My grandfather bought shares in 40 years ago, and we have never sold it. So shares by the reasonable families, shares are not sold. They are kept forever. They are kept for generations. So the question here is that why this temperament, why this kind of this kind of activity, this kind of mindset has not been developed in Pakistan. This is a very serious issue. And if you look at the Pakistan's overall floats in the market, they are very low, and very few companies can actually be said to be a listed company in that sense. So there are three. It is a two-pronged issue. Firstly, Pakistani regulations have made listed company a very difficult thing to operate. This is the first handicap. The second handicap is that the listed company, the shares prices are so volatile that I would not like to be there at all if I don't need money. So the third thing is that the undocumented economy is so large, and the kind of the capital which is available in the market, which is not the listed company capital market, is so strong that that raising money from that kind is a very difficult thing. So if somebody wants to actually develop the capital market in Pakistan, that should not be done. Let me be very clear. That should not be done in the building on the stock exchange. It should be done by economics sitting somewhere else. And whether people agree or not, all the regulations which come in the stock exchange are either done by the CCP or are done by the PSX, and I feel there's a serious conflict of interest there, because these people are actually brokers. These people are actually the whatever they are, but their mindset is completely different from what the national need is. So this is it looks quite skeptical about this system, but I am saying it because I have a first-hand experience of dealing all things. I think there will be very few people in Pakistan which have got this direct interaction with the stock exchange. I have sat down on the board for 4 years, and very frankly, I was not happy when I was sitting there, because I used to see that things are moving in not a direction we desire, and that's my view. And my last view is that we have divided this NCCPL and CDC and the stock exchange. Actually, what we are doing, we are actually adding the cost of doing business, because I personally feel in this day of technology, you don't need three companies. It should all be done at one stage. You should not have a CDC, you should not have NCCPL, it should be PSX, and that's all. And so things need to be now revisited for Pakistan's real market position. And second thing which is there, that there can never be any regulation which can improve the stock exchange. It has to be self motivation or the economic factors designed in a manner which will govern this thing. For argument's sake, I say there should be a clear regulation that anyone who invests here and keep it for 5 years, he will be giving credit on the 5th year. That will be an incentive. The last thing I want to say is that in the international market, the biggest investor in the capital market is always the pension funds. I am sitting on many trusts of the pension funds, and the pension funds, I have sat down on at least
21 pension funds in my clients, I have never invested a single penny in the stock exchange. There is a ability of investing certain amount of pension fund in the stock exchange. Why I never invested? Because as a trustee of the fund, I was not sure that it will be a good idea. So, firstly, there is a restriction that you can only invest certain amount. But the question is, all these things have to be seen. All these things have to be monitored. I am not concerned what is the PSX index at the point of time. I am more interested whether Karachi PSX or what Karachi Stock Exchange is actually providing capital at the zero cost to the businesses. If that is not there, then the stock exchange is not relevant for me. Yes, it is a market where shares are being traded or being dealt with. I am more interested whether the national savings are actually channelized to the development of Pakistan and the entrepreneurs are able to get interest-free capital without interest capital for their business expansion. That is not there at the moment, at the present time. And we have seen the fluctuation in share prices, which I am scared of at times. So these are my general comments. It looks quite skeptical, but these are my real-time experience, and I would like other people to share, to comment on what I have said. Thank you. Thank you so much. Can you hear me? Shabar, sir, thank you so much. Yes, we can. Yes, you can. Okay, thank you. So I would like to take this opportunity to introduce other respected panelists who would be joining us for the conversation today. Ms. Raida. Assalamualaikum. I believe there is an internet connection issue at Imran's end, which is fine. We will just move on to asking some questions. So, Mr. Shabar Zaidi, can you elaborate? Mobilizing private capital through securitization is the need of time. This person has requested your expert advice on emerging need and model of securitization to boost liquidity. So, if you can just elaborate on that. Yeah, if I understand correctly, you are talking about the securitization means debt instrument. You are talking about debt instruments. जी बिल्कुल ऐसे ही है. You know, when I was the director of the stock exchange, we tried our best to actually introduce the capital market for the debt securities, debt instruments. I believe, and I am not exactly clear at the moment. There are no debt securities available for trading in the stock exchange. If there is any, I'm not aware of it. And somehow or the other, in my personal view, the State Bank of Pakistan was supposed to be party to actually organize this market for the debt securities, but unfortunately, that could not be done. And if I understand correctly, there is no debt capital market in the country. Raida, can you confirm it or not? Assalamualaikum everyone. Shabar Saab, we do have debt instruments listed and available for trading as well. They are available in the BATS, Bills and Bonds section. Over the last 1.5 years, what the SCCP and PSX have done is revisit all the regulatory frameworks for debt listing and debt market overall.
and with sufficient changes within the framework, we have been able to bring in banks and larger institutes, NBFIs, as market makers to provide liquidity onto the bonds, debt market. And with that, we see as the banks and market makers are getting activated, we see trading coming in and activity happening. Other than that, we No, but also what I'm have saying, but is it available to the retail market? No. GG, it's available. We even have GDS now available to the retail market. Obviously, that will be available through the brokerages. The brokerage firms bring their clients on board to invest in these debt instruments. So they now also include the GDS, the government securities. They are also available now. No, but what I'm saying, if I'm a company X, can I raise a debt market in the stock exchange at the moment? No. Of course you can. Of course you can. You can come to the exchange, raise debt, whether you're a company, whether you're a government institution. So we have private as well as public markets. Abhi recently also, we had quite a few. We issued, different companies also issued and listed their debt. They issued debt through the stock market also, using the stock market's book building platform, whereby they got a lot of liquidity, subscribers, and subsequently listed that instrument on the exchange, which is now also available for the other markets. जब मैं था मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो डेट मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट होगा, वो जो उसका स्प्रेड है, वो बेसिकली स्टेट बैंक के रेट के साथ क्लैश करेगा, और उसको स्टेट बैंक वाज क्वाइट कंजर्वेटिव ऑन दैट पॉइंट. आई डोंट नो हाउ दैट बीन सेटल्ड. Actually, that has changed because we've made certain regulatory changes, and now the banks are also coming on as on the BATS terminal, providing liquidity and as market makers. With that, एक थोड़ा बहुत portion जो है of the public debt investors is going to come to this stock exchange. As I said, in the last 1 year, we've signed on about 8 banks who will be providing liquidity. इनमें से approximately 3 या 4 जो है वो इनफैक्ट 3 तो एक्टिवेट हो चुके हैं, और वो सर्टन सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो हेंस इट इज अ चिकन एंड एग सिचुएशन. थोड़ा सा by the time they activate and start giving two-way quotes, and the brokers will have also started introducing their clients directly. मैं आपसे पूछ रहा था ये कि सपोज करें आज हमारा कितना फ्लोट है जो अवेलेबल है और डेट का स्टॉक एक्सचेंज में अमाउंट रुपीस में, जस्ट एन एस्टिमेट. Yes, as of now, I wouldn't have that number, but we've raised more than 250 billion worth debt last year only. Fair enough. I think it's good, but I'm saying that this is a good move, and we should. But my concern actually about it's a good move, but my concern was basically about the capital markets, where I want to raise interest-free capital. Basically, that's capital which is there, and I am more concerned why the people are not investing in the shares. That's my basic concern. Common man. Okay, if I can elaborate a bit, I come from a more optimistic background at this point, and right now I think what the steps that are being taken, and I see positive changes happening in the regulatory framework. बहुत सारे factors, so I would agree with you, Shabbar Saab, कि ये तो unique है to Pakistan, the parallel economy, the low documentation, and that goes for both. That goes from the investor perspective, who would rather stay away from documented investments also. You see, when they come into the stock market, their investment is documented, whereas there are other modes of investment which are not as documented. On the other hand, we look at the corporates also. There are a lot of corporates who feel that coming into the formal sector by listing and all, they will have to become transparent. So there is a mixed feeling whereby listing entails a lot of documentation as well. On the other hand, I would say that in the last 2 years, बहुत सारे factors हैं. एक तो government के incentives,
जिसकी वजह से कंपनीज, आई मीन सबसे मेजर इंसेंटिव आई वुड से द इंटरेस्ट रेट का 13-12% से ड्रॉप होके 7% पे आना, उसके बाद कोविड रिलेटेड इंसेंटिवाइजेशन, all these things on a broader macro perspective have led to these companies having positive or improved bottom lines. Now in that mode they are now looking at expanding. पहले तो sustain और survive करना भी एक वो था. Now at least their bottom lines are slightly better that way. On the other hand, I would say from a regulatory perspective, SECB has been very active with PSX and बहुत सारे opportunities और options वो किए हैं. So existing main board की regulatory framework में काफी changes आए हैं where flexibilities have been brought in. Then other than that, I would say कि SECB के ही end से अगर आप existing board को देखें तो जो securities जो listing का act है उसके अंदर भी SECB ने कुछ flexibilities built in की हैं. Other than that, GEM board को लाना, जो growth enterprise market board है उसका introduction, इसके अलावा direct listing का भी recent एक और induction हुआ है, जहां companies के पास एक तरफ public offering regulations के amendments हैं, दूसरी तरफ ये नई offerings को लेकर आए हैं, जिसकी वजह से greenfield operations, new companies, they're all also now looking at the stock exchange as an option where they can raise capital from. I think एक और चीज है, थोड़ा सा I feel that being this frontline regulator, एक onus होता है investor protection के perspective से कि आप due diligence करें. We would not जैसे एक तरफ आपके पास ये स्टार्टअप इंडस्ट्री है जो कि बिल्डअप हो रही है, जहां राउंड 1, सीरीज ए, सीरीज बी फंडिंग आती है एंड दे आर ऑल गोइंग टूवर्ड्स कैश बर्निंग बिजनेस मॉडल्स, फिर भी उनके पास तीसरा या चौथा राउंड ऑफ फंडिंग आ जाता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट कंपनीज दैट कम टू द एक्सचेंज टू लिस्ट and raise capital, तो ये capital investors का होता है, public का होता है, where we feel that we need to do a certain level of due diligence on the company, that they're not running on a cash burning model. They're actually going to be sustainable businesses and their business plans are in place. And from that perspective, I think तो ये जो थोड़ी बहुत due diligence and care की aspects हैं, I feel we PSX and SECB should keep that intact. Otherwise, बाकी बहुत सारी इनफैक्ट अभी जो जेम बोर्ड के अंदर है मेजर फ्लेक्सिबिलिटीज बिल्ट इन हुई हैं, इवन CCG के लेवल से काफी फ्लेक्सिबिलिटीज बिल्ट इन की हैं. बट कुछ चीजें ऐसी हैं which we feel that once a company that comes and considers listing, they should have a proper structure or management in place which will ensure that the investor interest is also safeguarded. Further, आपने कुछ और पॉइंट्स की बात की, एक वॉलेटिलिटी का जो एस्पेक्ट है सर, विद थोड़ा सा मैं भी इंटरनेशनल थोड़ा बहुत मार्केट्स के ऊपर देख रही होती हूँ. फॉर एग्जांपल US मार्केट में हम देख रहे होते हैं, सो पर डे भी बहुत ज्यादा एट टाइम्स वॉलेटिलिटी होती है. दैट्स द नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट. बट हैविंग सेड दैट, वहाँ के मुल्क में बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स क्यों आते हैं टूवर्ड्स द स्टॉक मार्केट में? अगर आप बांग्लादेश को भी देख लें, हमारे रीजन में इंडिया को देख लें, you see the interest rate environment there is not as high as ours. मतलब हमारा बहुत बुरा भी इंटरेस्ट रेट अगर देखते हैं तो 6 और 7% है. Now and अच्छे में जब हाई में जाता है तो 14, 14.5, इवन 15% मिल जाता है. So as an investor, आपके पास अगर alternative होता है ना कि आप 6, 7, 10%, 8% भी earn कर लें through MSS, तो आप एक larger portion you would as a normal human being, आपकी क्या psyche है, you will want to go into a guaranteed return वाला option. आज भी अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो ओवर एज यू ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि मैं चाहता हूँ कि स्टॉक्स लेके मैं 10 साल तक भूल जाऊं. नाउ इसका अगर आप 10 साल का भी देखें तो 18, 19, 20% दिया है शेयर होल्डर वैल्यू, जिसमें सिर्फ डिविडेंड नहीं है, कैपिटल गेन भी है. सो रिटर्न वाइज द स्टॉक मार्केट इज देयर. However, when there is an alternative option of a guaranteed return,
तो ऑब्वियसली एक इंसान नॉर्मल प्रेफर ये करता है कि एक ज्यादा पोर्शन वहां डाले और फिर थोड़ा सा पोर्शन यहाँ डाल के उसको ऑगमेंट करें, ठीक है। सालों Thank you, में Mr. Mehta. आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए, आप बात करेंगे ना अमेरिका की या इंग्लैंड की या किसी और स्टॉक एक्सचेंज की, देखिए उसका कंपैरिजन हमारे साथ गलत है। उनके पास उनकी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड है, उनमें से मेजोरिटी होल्डिंग स्टॉक एक्सचेंज में पड़ी होती है। हमारे पास फ्री फ्लोट जो है वो 5-10% से ज्यादा तो कहीं होता ही नहीं है। तो जो आप स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं वो आप कंपनी में डील नहीं कर रहे होते बेसिकली, वो आप एक समझ लें कि एक स्क्रिप्ट डील करें। आपको ये आप यूएस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अगर वॉलेटिलिटी आ रही है तो पाकिस्तान में वॉलेटिलिटी आएगी। ये हमारा एक बेसिक इश्यू है कि मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ कि मुझे ये लगा है कि आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा है कि आप ये कह रही हैं सब कुछ ठीक है और ये सही चल रहा है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं है। ये ऐसे ही मैं तकरीबन 40 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ इसको, और ये ऐसे ही रहेगा अगर आप इस पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करेंगे। Fair enough. I am just saying that there are alternative options also, ठीक है। And recently हमने investors के perspective से new products as simple जो कि दुनिया में exchange traded funds हैं, वो market की entry point होते हैं for any investor. Only last year these 4 funds were launched. March में 2 और October में 2. So I would say कि थोड़ा सा I'm not saying कि everything is hunky dory and it's the best right now, but all I'm saying is that there are positive things that are happening and we want to continue this momentum. The other thing I would say is कि थोड़ा सा इसमें हमें जो कि हम कर रहे हैं, हम अपने brokerage industry को भी upgrade and facilitate and capacity building करना चाहते हैं, because you see the exchange can create a market but they can't go and convert. They can create awareness but they can't go and convert a customer. That is where the role of the major role of the brokerage houses and the consultants come in. Brokerage houses को हम लोग capacity build कर रहे हैं because अभी तक ये mode है कि जो traders होते हैं इनके पास they don't have business developing teams. आप किसी बैंक को भी देख लें, there are people who are managing operations, but then there are people who are going out to get business or convert business. मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ ना, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम लाखों में लैक्स में होगा रिटायरमेंट फंड्स, कम से कम लैक्स में होंगे रिटायरमेंट फंड। उनके पास लैक्स में उनके पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज हैं। I am not aware of a single retirement fund of any company which has invested in a stock exchange. Why? And what is the reason? Now that you know about it, would you like to tell me what is the reason? It's not a choice. It is because there are certain restrictions in the... Let me explain why. I am saying I have been the trustee of the many such retirement funds, and there is a 25%, or I don't know the percentage of fund we can use stock exchange. We as a trustee, because we are not the owners of that fund, we as a trustee always take a conservative view that because of the volatility, we feel why should we be blamed for something, losing something, so we want a guaranteed return. Simple as exactly. Now, there are two reasons for that. A, because you have an option where you can get a better return. आज अगर आपको 2% रिटर्न मिल रहा होता फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में या अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस में, तो आप जरूर जाते स्टॉक मार्केट की तरफ. मे बी यू वुड मेक अ वेरी ब्लू चिप डिविडेंड यील्डिंग स्क्रिप्ट्स का पोर्टफोलियो, बट यू वुड कंसिडर दैट. दैट्स वन. सही कह रहे हैं. फ्रेमवर्क ऑफ फंड्स, रिटायरमेंट फंड. आप तो ये कह रही हैं ना, आप तो ये कह रही हैं परमिशन नहीं है ना बहुत सारे रिटायरमेंट फंड्स को इन्वेस्ट करने की इन द इक्विटीज. रिटायरमेंट फंड्स के मैडम, अगर मैं लाइटर नोट पे लूं तो आप तो ये कह रही है ना कि ब्रा वाले को मार दो तो मैं जिंदा रहूंगा. नहीं, तो वो तो ऑप्शन हमने ही बनाया ना. आप तो ये कह रही है कि ब्रा वाले को आपने बात की, पड़ोसी को गोली मार दो. आप तो ये कह रही है पड़ोसी को गोली मार दो, तो जब तक गोली नहीं मारोगे मेरी जिंदगी नहीं है. जब उस मार्केट को खत्म करोगे तो ये मार्केट जिंदा रहेगी. There's a restriction on retirement funds investment in the stock market. We are taking these up.
with the relevant authorities to make a level playing field. नो मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास 25% का राइट है ना, मैं वो भी नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ आपको, मेरे पास 25 आपको सारे आप कल रिसर्च करिएगा, जितने भी रिटायरमेंट फंड्स हैं उनमें 25% 20% का राइट है, वो कर सकते हैं, मगर मेरी नॉलेज में आज तक किसी ने नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ आपको। देखिए थोड़ा बहुत तो वही मेरी बात है कि जी आपके पास ऑप्शन है, दूसरों के पास ऑप्शन नहीं है। एक दूसरी चीज, as you said, you yourself said, देखें CGT, there is no level playing field between other instruments and the stock market investment. These are certain factors. Unless we take these up and we fix them, this anomaly will always be there. But having said that, doesn't mean कि जब तक perfect situation नहीं होए तो हम आराम से बैठ जाएं कि जी we don't have that. आप मेरी बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए मैं तो खुद चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जाऊं मैं, और मैंने आपको बताया कि दुनिया का जितना भी स्टॉक मार्केट है वो उसकी जो स्टेबल होता है इन्वेस्टमेंट, वो हमेशा होता है रिटायरमेंट फंड्स का, पेंशन फंड्स का, क्योंकि वो कभी विड्रॉ नहीं करते, क्योंकि उनकी तो मगर पाकिस्तान में आप अपनी फिगर्स निकाल लीजिएगा, रिटायरमेंट फंड का पैसा शायद आपके पास 100 रुपए भी नहीं हो। उसकी वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने उस मार्केट को भी तय भी नहीं किया। आपने कभी इसलिए नहीं गए कि आपका जो मार्केट है वो एक डिफरेंट टेंजेंट में ऑपरेट कर रहा है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहा हूँ जो हम रोजाना सुबह शाम देखते हैं। तो मेरा सवाल आपको ये कहने का ये है कि रेगुलेटरी अफेयर्स ये मसले को हल नहीं करेंगे जब तक आप मेरा माइंडसेट और परसेप्शन चेंज नहीं करेंगी कि मैंने स्टॉक मार्केट में आके लॉन्ग टर्म में पैसे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका रिटर्न भी ज्यादा है, आपका सब कुछ ज्यादा है, बट स्टिल पीपल नहीं आते, कंजर्वेटिव पीपल नहीं आते, बिकॉज यहाँ की वॉलेटिलिटी ऐसी है कि मुझे एक रिस्क नजर आता है। दैट्स ऑल थिंग आई एम सेइंग। आपको ऐसा कोई इंडेक्स इशू करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इंडेक्स, जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं और वो हमें 10 साल में डोमिनेट करे कि वो कभी मूव नहीं हुआ है। ये कह रहा हूं मैं आपको, जो मेरा इंडेक्स है वो वॉलेटाइल इतना ज्यादा है कि मुझे चलिए, I'll not get into that debate. Volatility, as I said, volatility is there across the board in all stock markets. Again, retirement funds directly नहीं आते, but through stock या equity mutual funds आते हैं. I don't have the figures and numbers right now. I think उसके ऊपर तो asset management companies ही comment कर सकती हैं, या I would need to pull out that data and check that before I make a number claim. But through mutual funds, retirement funds do access the equity market. दूसरी आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ और भी points थे, and I think from our perspective also, those product offerings, outreach programs, investor education programs, we are continuously working on that, and we now even going out to create awareness for the stock exchange as an alternative option to raise funds and equity as well as debt, both. ठीक है, fair enough. जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, I think आपकी आवाज़ नहीं आ रही. Let's introduce another speaker, Mr. Asif is here. Mr. Asif Sumro has previously worked as senior advisor to Swedish Frontier Markets Assets Manager, Tundra founder AB. His main responsibilities included managing Pakistan's assets and contributing to the frontier markets. Now, prior to that, he has also held the position of head of equity at JS Investments, where funds under his watch were nominated for several Lipper Awards. Mr. Sumro has a strong knowledge of capital markets and is an avid reader of financial and economic affairs. He holds a first-class honors in BSc Investments and Financial Risk Management. Mr. Sumro, welcome on board. I would like to ask one question. Assalamualaikum Shahzad, thank you for having me. जी थैंक यू. एक तो आप मुझे क्विकली कमेंट्स दे दीजिए, अभी जो डिस्कशन हुआ बिटवीन शब्बर साहब एंड रायदा,
एंड आई वुड लाइक टू नो कि ये जो MSCI का जो डाउनग्रेड है और जो अभी रिसेंट हमें एक वॉलेटिलिटी जो नज़र आई है, इस पे आपके क्या कमेंट हैं और किस तरह से जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं वो अफेक्ट हुआ है? प्लीज सोमरो साहब। Ji, thank you so much. I think I can say very comfortably over here that the MSCI downgrade is not an exciting news for Pakistan. We must accept the fact कि ये हमें 2 मरतबा एक recognize हमें status मिला था emerging market का, और हमने तकरीबन दोनों मरतबा ही उसको गवाया है. So it is not something to be proud of. ये वही बात है कि मैं छोटे शहर में, छोटे एरिया में एक बड़ा घर ले लूँ, बनस्पत एक बड़े घर में, बड़े एरिया में, पॉश एरिया में छोटा घर. लेकिन इसका जो इम्पैक्ट ये होगा फॉर इन्वेस्टर्स, आई थिंक इनिशियली इट्स अ डिसअपॉइंटिंग न्यूज. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब इन्वेस्टर्स जो है, बड़े इन्वेस्टर्स, दे आर ऑन साइड लाइन एंड दे आर सेइंग राइट नाउ कि हम लोग वेट कर रहे हैं जब फॉरेन सेलिंग आएगी. अच्छा देखिए, MSCI जो है एक बेंचमार्क है. इस बेंचमार्क को देखते हुए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो डिसाइड करते हैं कि कौन से मुल्क में जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, कौन सी बड़ी कंपनी. एक एजाज होता है समझ लो टॉप 100 इंडेक्स का, जो इनका MSCI 100 होती है, उसमें कौन सी कंट्रीज आती है. अब क्या हुआ, जब से ये न्यूज आ गई है कि फॉरेनर जो है पाकिस्तान से डिसइन्वेस्ट करेगा, जो पैसिव फंड्स हैं, तो उसके बाद जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशन या लोकल, वो थोड़ा पीछे हट गए. वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जब नवंबर में MSCI की सेलिंग आ जाएगी, फोर्स सेलिंग है, ये ऑटोमेटेड है, ये मैकेनिकल है, उनको बेचना ही पड़ता है. तो वो जो फोर्स सेलिंग आएगी तो शायद हम लोग तब ले लेंगे, अभी इस वक्त कुछ रश नहीं कर रहे. अच्छा, इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बड़ा देखना जरूरी है हमारे ऑडियंस और इन्वेस्टर्स के लिए. देखें, MSCI इमर्जिंग मार्केट्स में जाना एक एजाज है कि आपकी मार्केट बढ़ रही है, आपके पास इतनी बड़ी कंपनीज है जो वो एलिजिबल है ग्लोबल स्केल पे समझने के लिए, और इन्वेस्टर्स फिर आपको रडार में जाते हैं. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक मरतबा वो एजाज अचीव करते हैं और फिर इस एजाज को हम खो देते हैं. जैसे हमारी डिस्कशन अभी चल रही थी, काफी इंटेंसिव डिस्कशन चल रही है कि रीजन क्या है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रही कैपिटल मार्केट की. देखें, वॉलेटिलिटी इज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अब उसमें हमें ये बिल्कुल समझना चाहिए कि इसमें सिर्फ ना स्टॉक मार्केट के फॉल्ट है, ना इन्वेस्टर का, ना ब्रोकर का, ना गवर्नमेंट का. ये इसेंशियली हर चीज इंटरकनेक्टेड है. मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोग जाते हैं इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए कि आप आ जाएं, ब्रोकरेज अकाउंट खोलें, चाहे वो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें या आप चले फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें. असल मकसद क्या होता है? असल मकसद ये होता है कि पैसे कमाने, इन सिंपल वर्ड्स, और रिस्क एडजस्टेड पैसे कमाने. इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से चंद इकोनॉमीज में से हम वो होंगे जो 13 साल में हम लोगों ने तकरीबन 3 मरतबा बूम एंड बस्ट देखा है. 2008 में, 2013 में और 2017 एंड 18 में. इसमें जो पुरानी जनरेशन के मैं इन्वेस्टर्स कहूंगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हुए हैं, उनका जो है ना एक ट्रस्ट उठ गया है मार्केट में से, कि अगर वो देखते हैं कि एक चीज इन डॉलर टर्म पीक पे $100 की हो जाती है, तो वो गिरते गिरते तकरीबन $20 की हो जाती है. तो आपका एक सिग्निफिकेंट प्रेशर आता है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट से, तो इन्वेस्टर उससे घबरा जाते हैं, कहते हैं यार स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट नहीं करना. ठीक है, लेकिन इट इज नॉट द कंपनीज फॉल्ट, इट इज नॉट द स्टॉक्स फॉल्ट, it is a macroeconomic deterioration of Pakistan's balance of payment, which is a reflection of major structural issues जो इस वक्त हम डिबेट नहीं कर सकते, कि हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बेस बढ़ नहीं सकता. मैं इसके पैरेलल एग्जांपल दूं, आपके वियतनाम के अंदर, आपके बांग्लादेश के अंदर, वहां पे एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, तो आपके इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं करते क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है. ये स्टॉक मार्केट है, ये 20-25% ऊपर नीचे चीजें जाती रहती है, सेक्टर्स है, दैट्स ऑल राइट. ये ड्यूरिंग द पीरियड ये एडजस्टमेंट होती है बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. लेकिन क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक शॉक्स नहीं आए, तो वहां पे उनकी मार्केट ग्रो कर रही है, वहां पे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं. एक ही चीज जो पाकिस्तान में $100 मिलियन की होती है और बांग्लादेश में वो $200 मिलियन की होती है, इंडिया में वो $300 मिलियन की होती है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन ज्यादा है. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं तो इन्वेस्टर्स को हम कन्विंस करते हैं कि अच्छा टाइम में इन्वेस्ट करें. इन्वेस्टर का जो प्रायर एक्सपीरियंस है, या उनके फ्रेंड्स का, या उनके फैमिलीज का, या उनके पेरेंट्स का, इट्स नॉट दैट इम्प्रेसिव. वो कहते हैं 10 साल पहले हमने एक शेयर लिया था, वो आज इधर हो गया, 5 साल पहले एक शेयर लिया था, उधर हो गया. दे आर लुकिंग एट द बैड केसेस and they are ignoring the good cases. I can give you plenty of examples right here जो हमारे रिसर्च बैक्ड है, डेटा बैक्ड है, कि कुछ कंपनीज है उन्होंने 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में ट्रेमेंडस रिटर्न दिए हैं जो रिस्क फ्री से बहुत अच्छे होते हैं.
लेकिन क्योंकि ऑन वन हैंड जैसे शबर साहब कह रहे थे कि जो लार्ज इंस्टीट्यूशनल पेंशन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको चाहिए सर्टेनिटी, क्योंकि उन्होंने काफी मरतबा देखी वॉलेटिलिटी। इन्वेस्टर अगर पैसे कमाने के लिए आता है तो कहता है ठीक है यार आज स्टॉक मार्केट में 25-30% कमा लेंगे, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होगी 11-12% रिस्क फ्री मिल जाएगा तो उधर ही पैसे लें और कहीं और इन्वेस्ट नहीं करें, बिकॉज द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर इज टू मेक मनी। और उसको काफी मरतबा झटके लग चुके हैं इन लास्ट 12 ईयर्स। नाउ विद होपफुली करंट regime, और हम लोग ये कोशिश ये कर रहे होते हैं, हम इन्वेस्टर्स को यही कन्विंस कर रहे होते हैं कि वी आर गोइंग टू गो फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर इकोनॉमी में सस्टेनेबल ग्रोथ आती है तो कंपनीज जो है प्लान करती है और वो आगे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से कर रही होती है और एक ऑटोमेटेड स्टेबलाइजर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आजकल ऊपर जा रहे हैं, तो अगर हम इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि आप ये शेयर्स खरीदें क्योंकि ये बेनिफिट करते हैं, इंटरेस्ट रेट साइकिल आपकी ऊपर जा रही है, 25 बिप्स इंक्रीज हुए हैं, तो हम इन्वेस्टर्स को कहते हैं आप बैंकिंग शेयर्स में। इंटरनेशनल कोल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ये कुछ मतलब स्पेक्युलेटिव चीज नहीं है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट है, क्योंकि कोल प्राइसेस ऊपर जाने से सीमेंट की कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होती है। सिमिलरली हमने देखा है कि गाड़ियां आपकी महंगी हो रही है, लीजिंग कम हो रहे हैं, तो हम उसको इम्पैक्ट निकाल के बताते हैं, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं एक इन्फॉर्म डिसीजन के साथ कि इसके ये वैल्यूएशन इम्पैक्ट है। फिर वो इन्वेस्टर को एक टाइम चाहिए होता है। देखिए स्टॉक मार्केट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्ले। whosoever should come in or must come in should take a horizon of 3 to 5 years, and they should do their proper research, and our job is to help them do that proper research so that they are making a decision। उनको एक aggressive greed को control करना चाहिए और fear को उनको tame करना चाहिए। हमारे पास जो स्टॉक मार्केट में जो न्यू ब्रीड ऑफ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो यंग है, एम्प्लॉयड है, फीमेल्स है, दे आर इन डिफरेंट सिटीज। इशू ये है कि यहाँ पे दे आर नॉट एबल टू हैव दैट मच सेविंग दैट दे कैन इन्वेस्ट इन property or buy a house, so they have monthly saving of say even 50,000, 20,000, 1 lakh rupees। तो अब वो कह रहे हैं कि मंथली एक पूल बनाते हैं सेविंग का। यस, दे हैव अ चॉइस टू कीप देयर मनी इन सेविंग स्कीम व्हिच इज ऑफरिंग ग्रेट रिटर्न्स, बट ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी ट्राई टू कन्विंस देम, हम उनको एजुकेट करते हैं कि आपके देखें आपके प्रोफेशन ये आपको ये समझ आ रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में एक इस्लामिक बैंक है उसकी ग्रोथ ज्यादा है, और हम उसे कहते हैं कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पे गाड़ियों की सेल ज्यादा है, नई हाइब्रिड आने वाली है, प्रोडक्शन बढ़ रही है। उनको एजुकेट करना बड़ा जरूरी है, लेकिन दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, जो भी हमारी मेहनत है जो हम केएसबी में कर रहे हैं, ये सारे मेरे इंडस्ट्री कॉलीग कर रहे हैं, दिस कैन गो टू वेस्ट अगर 2 साल आगे जाके ऑयल प्राइसेस गो टू $110 and we have serious balance of payment issues and interest rates are supposed to be high to 13%, तो लोगों का जो है ना ट्रस्ट उड़ जाता है। Now what we are trying to debate here and understand and come to a point कि stock market is very relevant for capital markets development and for investors as well, the common investor, the retail investor, because इनके लिए एक एवेन्यू होता है इन्वेस्ट करने के लिए और आगे जाके अपने पैसे बनाने के लिए। और मैं आई कैन टेल यू फ्रॉम आवर डेस्क there's a lot of work which is going on investor education. I would only take a few more minutes and then we can raise the ball to the other panelists. देखिए 10 to 12 years ago जब भी कोई लिस्टेड कंपनी अपने रिजल्ट अनाउंस करती थी तो वो एक अपने समझ ले हार्ड कॉपी पेपर में या फिर सीडी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होती थी। नाउ इट्स अ क्लिक ऑफ अ बटन। कोई लंदन में बैठा है, कोई कराची में बैठा है, कोई कोयटा में बैठा है, वो पीएसएक्स की वेबसाइट पे फौरन रिजल्ट देख के समझ सकता है कि क्या हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी आ रही है। हमारे पीएसएक्स में एसईसीपी ने डिजिटाइज करने की बड़ी कोशिश की है। अब इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी होने जा रही है कि अकाउंट खोलना जो है ना, पहले एक पेपर वर्क होते थे, साइनिंग होती थी, अब काफी चीजें ये डिजिटलाइज हो गई हैं। तो ये देखिए ये इन्वेस्टर जो है रिटेल इन्वेस्टर आहिस्ता आहिस्ता से मार्केट में आते हैं और उनको एक आपको एक नर्चर करना होता है, कल्टिवेट करना होता है ग्राउंड फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, लास्ट थिंग फ्रॉम माय साइड इज द पॉलिसी कंटिन्यूटी। फॉर इंस्टेंस आई बिलीव इन व्हाट शबर शाह साहब वाज सेइंग कि हमें नई कंपनीज को इनकरेज करना चाहिए लिस्ट कराने के लिए कि आप आए, अपने पैसे आप जो है ना वाइट हो, आप डॉक्यूमेंट करें अपनी अमाउंट और आप अपने ट्रांसपेरेंसी करें और स्टेट जो है आपको बेनिफिट देगी। आप आईपीओ करें कि आप आपको नॉमिनल टैक्स चार्ज करेंगे 10 से 15%। मैं आपको इंडिया की एग्जांपल देता हूं शहजाद कि वहां पे जो छोटी कंपनीज हैं उनके टैक्स रेट कम किए जाते हैं 20%, 22%, 25%, क्योंकि कंपेटिटिव वर्ल्ड है कि आप लिस्ट कराएंगे
और आवाम को अपना शेयर देंगे, फ्री फ्लोट अपना देंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर करेंगे और शेयर होल्डर एक्टिविज्म के अंदर आपके पास कोई बोर्ड में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन आए तो हम आपके टैक्स रेवेन्यूज कम कर देंगे। पाकिस्तान में लोग इतने घबराए हुए होते हैं कि मेजॉरिटी जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है, दे आर नॉट विलिंग टू गेट देमसेल्व्स प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड और even get their accounts clean, let alone coming on the stock market and listing themselves, because कहते हैं आपकी प्राइस टू अर्निंग जो पीई रेशियो होता है, हमें 100 रुपए की एक कमाने वाले पे उसमें 600 रुपए की अर्निंग मिलेगी, 600 रुपए की वैल्यू मिलेगी, जो 6 का मल्टीपल है। तो जैसे मार्केट ग्रो करेगी और ये पीई रेट आपके बढ़ेंगे, तब हमें एक इन्वेस्टर्स को पॉलिसी कंटिन्यूटी देनी चाहिए कि 10 साल तक आप आए आईपीओ करें। लेकिन हम लोग एमनेस्टी तो स्कीम भी तो देते हैं ना, तो हम लोग इन्वेस्टर्स को ये कहें, कंपनीज को बोल के कि यार आप लिस्ट कराएं और आपके वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो छोटे आएंगे उनको टैक्स आप उनको फैसिलिटेट करें। मैं सिर्फ एक लास्ट चीज ये कहूंगा बिफोर वी कैन गो टू द पैनल, आई बिलीव द टैक्सेशन regime that also needs to be changed. फॉर इंस्टेंस, अगर एक इंसान अरब रुपए कमाता है या 10 करोड़ रुपए कमाता है, उसका भी सीजीटी रेट वही है जो एक गरीब आदमी 50,000 रुपए स्टॉक मार्केट में गेन करके जाता है। आई थिंक देयर शुड बी क्लासिफिकेशन कि आपने अगर साल में 10 मिलियन का गेन किया है स्टॉक मार्केट से तो आपका कितना होना चाहिए, और 500 मिलियन का गेन किया है तो आपका गेन टैक्स कितना होना चाहिए। बिकॉज ये मार्केट पूरी दुनिया में, यूएस के अंदर, यूके के अंदर होते हैं आइसेस एंड पिट्स, वो जाके जो है ना अब इंडिविजुअल रिटेल खरीदते हैं, वहां पे लोगों की मेजोरिटी सेविंग्स लिंक होती है स्टॉक मार्केट से। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी, because of the boom and bust, because of the high interest rates, people like not convinced to come into the stock market, and this will take time to change their mindset. उसको करने के लिए टाइम लगेगा, एक conducive economic environment चाहिए और आपके इंटरेस्ट रेट्स चाहिए सिंगल डिजिट पे, ताकि लोगों को एक रीजन मिले स्टॉक में आने के लिए और वो उनको एक ट्रैक रिकॉर्ड हो। जो इंसान 3 साल तक पैसे बनाता है ना, तभी वो किसी को रेकमेंड करता है कि आप आए स्टॉक में इन्वेस्ट किए, बिकॉज हमारा भी एक्सपीरियंस अच्छा है। सो फार जिन लोगों ने 2-3 साल में इन्वेस्ट किया है, they have lost a lot of money. So I think it will take time and a lot of collaboration to convince people to come back into the market and then go ahead for next 5 years or few years. But until then, I think we are still a very fragile economy and a very small fragmented market. There's a lot of work that needs to be done. Thank you, Asif. Can you hear me? जी आई कैन हेयर यू, बस वो डबल रिपीट हो रही है। आई वुड रिक्वेस्ट आसिफ आप अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। यस इमरान। अच्छा, my next question is around इमरान यू आर ब्रेकिंग, अगर आप वीडियो ऑफ कर दें तो इट माइट वर्क। Imran, we can't hear you. Shazad, till Imran comes back, can I would like to add a few comments here. जो कि building on what क्या कहते हैं सुमरो साहब said, basically number one जो इन्होंने बात की from an investor perspective on the tax या CGT regime, from a corporate perspective जो कुछ benefits या relaxations या incentive government ने दिए हुए थे listed companies को अभी पिछले 3 साल तक या 4 साल तक, उसमें 4 साल का एक 20 and 10% टैक्स का बेनिफिट भी था जो कि अभी रिट्रैक्ट कर लिया गया लास्ट ईयर। नाउ हैविंग सेड दैट, हमारा तो ये एक रिक्वेस्ट ये थी कि देयर शुड बी अ क्लियर differentiation between a listed company and otherwise. When a company comes on board and gets listed, it is adding to the exchequer, it's revenue, it's adding to documentation, it's spending a lot of money also to hire professionals, manage the CCG, manage the disclosure requirements, having proper CFO, audit committees and HR committees, everything in place. Now, in order to do that, we need to also encourage new companies to come on board. In order to keep this momentum going, we would, expect or hope that the government looks at all this.
and considers reinstating or adding some other tax incentive or benefit for companies who come take that bold step to come and get listed. So एक तो ये चीज थी, I think in terms of capital market development, it's not just the market players, चाहे आप frontline regulator की बात करें, apex की बात करें या market participants की बात करें, सिर्फ उनका रोल नहीं है, बट यहाँ बहुत मेजर रोल इकोनॉमी, गवर्नमेंट का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, इन सब का भी एक बहुत मेजर रोल है, जो कि आई फील will spur the growth and improvement in the developed market, in developing the capital market. And again, MSCI के perspective से एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी to clear वो कि yes, emerging markets थी, हम 2 दफा वापस आए emerging markets में आके, पिछली मर्तबा का तो नहीं कह सकती, but as of this time around, our companies were meeting all the regulatory requirements. We were within the entire compliances and everything on the emerging market index. However, what really triggered this drop was the very fact that the weightage या liquidity weightage जो impact हुई है ना, हमारा size बहुत छोटा हो गया. Now one major cause for factor which caused this is the very fact that our rupee value parity is not there. Our devaluation has led to us losing that size, because emerging markets हो या frontier markets, MSCI तो आपको dollars में evaluate कर रहा होता है. अब आपकी चाहे as a company the size has grown, the amounts have grown in rupees, but in dollar value we've lost, and that is which hit us. It wasn't our regulatory compliance, or हम बहुत बिल्कुल at par थे. But again, I would not say कि ये companies का fault है या इसमें कोई brokers का fault है या investors नहीं आए. It is a very unique situation where our money is losing its worth, which is leading to our, इसको मैं degradation भी नहीं कहूँगी, it is a reclassification. There are certain fund managers who invest and allocate or demarcate funds for frontier markets, certain investors who look towards the emerging markets with a different view and different objectives. So yes, we've been reclassified. However, with it is owing to that. It is not owing to regulatory non-compliance or anything on that. बिल्कुल सही कहा रायदा आपने, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. रायदा, आपने बहुत अच्छी बात करी कि मैडम, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? ये जो आप बात कर रही हैं डेप्रिसिएशन की, ये तो ठीक है, बट उनके लिए जो बैरोमीटर है वो तो फ्री फ्लोट है ना जी. वो तो कंपनी का ओवरऑल कैपिटल तो नहीं है, फ्री फ्लोट अवेलेबल जो है वो उनका इंडिकेटर है. अगर आपका फ्री फ्लोट इतना लो होगा तो ऑब्वियसली आप बहुत जल्दी आते जाते रहेंगे उसके अंदर से. डू यू एग्री और नॉट? शब्बर साहब, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन. शब्बर साहब, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू. देखिए, रायदा ने एक बहुत अच्छी बात करी कि जी रेगुलेटर्स हैव अ बिग रोल टू प्ले इन दिस. व्हाट इज योर व्यू अबाउट द चेंजिंग रेगुलेशंस? अ वेरी रीसेंट एग्जांपल इज, हेलो जी इमरान, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है. लेट मी कंटिन्यू. आसिफ साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी, कंटिन्यूटी, एंड रायदा ने भी फोकस किया. मेरा सवाल ये है कि जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स हैं, क्या उसमें भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए? लेट मी फ्रेज माय क्वेश्चन. देयर हैव बीन एंगेजमेंट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बिजनेस काउंसिल ग्रुप्स ऑन रीसेंट विड्रॉल ऑफ इंटर कंपनी डिविडेंड्स. उसका जो रिलीफ था एक्सटेंडेड. जवाब देता हूं शहजाद. पहले मैं दोनों इसका जवाब दे देता हूँ. ये दूसरा वाला, देखिए, मैं पाकिस्तान में शायद वो आदमी हूँ जिसने हर रेगुलेटर से डील किया है. मैं 4 साल स्टेट बैंक के बोर्ड पे भी रहा हूँ, मैं SCCB के बोर्ड पे भी रहा हूँ, मैं स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे भी रहा हूँ, और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट के बोर्ड पे भी रहा हूँ. मेरे हिसाब से लिस्टेड कंपनी पाकिस्तान में ओवर रेगुलेट हो गई है. जो मैं अकाउंट्स देखता हूँ, मैंने ICICI के अकाउंट्स में ICICI के बोर्ड पर हूँ, उस अकाउंट की जो वेट है वो कोई आधा किलो है. और मैं डायरेक्टर हूं, मैं अकाउंट पढ़ना भी पसंद नहीं करता. मैं तंग आ गया हूं उसकी अंग्रेजी पढ़ के कि उसमें क्या लिखा हुआ है. तो पहले तो हम ये डिसाइड करें ना कि जी हम ये ओवर रेगुलेशंस क्यों करना चाहते हैं, हम क्या चाहते क्या है, हम मतलब हमारे दिमाग में क्या है, हम उस कंपनी के साथ क्या
उस कंपनी को करना क्या चाहते हैं? मेरे पास 85% होल्डिंग है और मैंने लिस्टेड करा लिया है, तो मेरे ऊपर एक अजाब पड़ गया है कि मैं उसकी कागज पे कागज आई एम मैं आपको प्रैक्टिकल साइड बता रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ, सामने बैठा हुआ। तो एक तो ये जो रेगुलेशन है, इंस्टीट्यूट चार्ट अकाउंट की रेगुलेशन, स्टेट बैंक की रेगुलेशन, एससीसीबी की रेगुलेशन और स्टॉक की रेगुलेशन, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बात करता हूँ, पठाना वाली बात, इसको एक छुरा लेके 1/4 कर दे। ये जो आपने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये सब जो है ना, मैं उसका फाउंडर हूं, मतलब इंस्टीट्यूट चार्ट अकाउंट फाउंडर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पाकिस्तान में कंप्लीटली फेल हो गई है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, जिन लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड मिला कंपनीज को, वो कंपनियां अगले साल बैंकरप्ट हो गई। मैं आपको 2 मिसाल दे सकता हूं, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड लिया वो अगले साल बैंकरप्ट हो गई। तो ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे आपने लोगों को नौकरियां दी हुई है ना, ये बंद करें। ये अकाउंटेंट की नौकरियों का तरीका है कि जी 4 आदमी को नौकरी मिल जाती है, उसमें 5-6 बंदे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी कम्युनिटी के ना, उस समय एम्प्लॉय हो जाते हैं। मगर मैं जब उस साइड पे बैठता हूँ, कंपनी साइड पे, तो मैं तंग आ जाता हूँ कि यार ये क्या बकवास है। मतलब इतनी मोटी अकाउंट है, वो ऑडिटर आता है, उसको ना अलिफ आता ना बे आता, उसको कंपनी का समझ नहीं आता, वो कहता नहीं जी IFRS में ये लिखा हुआ है। वो भाई IFRS में लिखा है, तुम चाहते क्या हो? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रेगुलेशन का मतलब, मैंने किसी को कहा था, शहजाद लाइटर नोट पे कह रहा हूं मैं, कि हम मेमनी में सोचते हैं, फिर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर इंग्लिश में लिखते हैं। तो हमें तो रेगुलेशन लिखने का आती भी नहीं है, हमने तो कॉपी की होती कहीं से। मतलब हम रेगुलेशन हमारे लिए कॉपी है। मैंने क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ये हैंडबुक मेरे हाथ की बनाई हुई है, मुझे पता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि लिस्टेड कंपनी को लाने के लिए रेगुलेशंस को इतना आसान कर दें कि वो आदमी एक रीजनेबल तरीके से लिस्टिंग में आ जाए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट बोर्ड, HR कमेटी, ऑडिट कमेटी, ये वाली कमेटी, ठीक है, फेयर इनफ। मगर मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ये बात कि मैं प्रैक्टिकल साइड पे आपको बता रहा हूं कि उन कमेटियों का कोई मकसद नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मुझे आप एक बात बताइए शहजाद साहब, मैं 3 जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं। मैं हूं ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मुझे किसने अपॉइंट किया है? मुझे अपॉइंट किसने किया है? ऑनर ने अपॉइंट किया एक्चुअली। तो मैं इंडिपेंडेंट कहां से हो गया? मुझे बताएं ना, मैं इंडिपेंडेंट कहां से हो गया? मुझे समझाएं जरा कि मुझे अपॉइंट तो उन्होंने किया है। अब सवाल ये नहीं है, ये है, मैं उसको एग्री करता हूं, मगर इसको थोड़ा आसान करें थोड़ा, ये ना, मैं तो क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रेसिडेंट हूं, मुझे पता है। कमिंग बैक टू द कॉर्पोरेट, ये इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है, ये रेगुलेशन मैं लेकर आया था। और इस रेगुलेशन का मतलब था कि पाकिस्तान में हम ग्रुप कंपनीज को फ्लोट करें, ग्रुप कंपनी को फ्लोट करें और ग्रुप चलाएं कंपनियों के। एंग्लो का मैंने पहला ग्रुप बनाया था और एंग्लो के लिए मैं ये लेकर आया था पूरा, इसके ऊपर हमने एक कमेटी बनाई थी। अब प्रॉब्लम ये पाकिस्तान कि इनको समझ नहीं आती कि इंटर जो है वो डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती। जब भी आप ग्रुप बनाएंगे उसके अंदर, तो ये एग्जेम्पशन नहीं है, ये एग्जेम्पशन नहीं है, ये मजबूरी है। अगर आपने ग्रुप को प्रमोट करना है तो आपको इंटर कॉर्पोरेट टैक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि अदरवाइज वो तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी। तो ये जो आपने हरकत की, ये मेरे इसाक डार साहब ने जब मैं चेयरमैन FBI बना, अब ये इस साल इनको फिर नजर आया, इसको आउट कर दिया। अब ये अगर आपने इसको आउट रखा है तो पाकिस्तान के सारे ग्रुप खत्म हो जाएंगे और वापस कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और ये पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। तो ये इनको समझना चाहिए, ये मेरे अपने हाथ में लिखा हुआ सिस्टम है साहब। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, मैडम आपने बातें की स्टॉक की, जो इस्लामाबाद में रेगुलेटर बैठा हुआ है, आपके ख्याल में वो स्टॉक मार्केट समझता है? आप ईमानदारी से बताइए मुझे, मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ। रेगुलेटर जो एपेक्स रेगुलेटर है आपका, क्या उसको स्टॉक मार्केट की समझ है? मुझे ईमानदारी से बता दें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कोई नालायक। देखिए बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं ना शबर साहब, दैट इज 100% correct. Even us at the stock exchange level, we are sitting as an apex regulator, as a frontline regulator. SECP is apex regulator. I think from the ground, on ground, ये जो इनफैक्ट ये अरसलान भी बैठे हैं, हम कितनी मर्तबा इनको रीच आउट करके ये रिक्वेस्ट करते हैं, कंसल्टेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हर्डल्स हैं, it is their responsibility because they're on ground, they're
interacting with investors, they are interacting with corporates, put in a formal document, put in a request to us to look when कि दुनिया में दो बातें समझिए आप। दुनिया में जो भी स्टॉक जिनका फ्रंट रेगुलेटर होता है ना, एपेक्स रेगुलेटर, पहली बात तो वो कभी भी उस शहर में नहीं होता जिस शहर में स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में होता है SEC, इंडिया में बॉम्बे में है सेबी, इस्लामाबाद बैठ के कराची स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो एपेक्स रेगुलेटर होता है, उसके जो एम्प्लॉई होते हैं ना, वो एक्चुअली ब्यूरोक्रेट कभी नहीं होते, वो होते हैं स्टॉक मार्केट के एक्स प्लेयर या प्रोफेशनल या कंसल्टेंट वहां पे, क्योंकि वो एक रियल मार्केट से डील कर रहे होते हैं। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट की नौकरी करूं SECP में 18, 20, 19, 25 ग्रेड की या एक सिस्टम की, और मैं बन जाऊं एपेक्स रेगुलेटर, आप कभी नहीं बन सकते, यू विल बिकम अ ब्यूरोक्रेट। तो पहले तो हमसे डिसाइड करें कि हमारा जो एपेक्स रेगुलेटर है वो कौन है और वो क्या चाहता है। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल ओपन अल्फाज में कह रहा हूं कि जो आपका एपेक्स रेगुलेटर है उसको स्टॉक मार्केट की सिर्फ रेगुलेशन का पता है, मार्केट का नहीं पता। जो मार्केट किस तरह मूव कर रही है, इसकी क्या फंडामेंटल्स हैं, इसके पीछे अंडरलाइन क्या है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो पहले तो आप SEC को क्लास लेकर आए, उसमें वो लोग बिठाएं जो लोग मार्केट को समझते हैं, जिन्होंने जिंदगी मार्केट में गुजारी है। वो जब अगर आप याद करें, जब खालिद मेंटर साहब होते थे और शाहिद गफ्फार वगैरह होते थे, तो एक अलग किस्म का SECP हुआ करता था। अब जो SECP आपकी लोग है, ये लोग कभी जिंदगी में स्टॉक मार्केट में डील नहीं किया नहीं इन्होंने, ये उसकी निटी-ग्रिटी को नहीं समझते हैं। मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि पहले हम ये डिसाइड करें कि रेगुलेटर खुद कौन है, कितना जाता है, आप उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। मेरी बात समझ पा रही है या मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर सका या नहीं? रेगुलेटर को स्टॉक मार्केट का नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। आपके ख्याल में आज है? सॉरी, आपके ख्याल में आज है? देखिए, what I can actually say with confidence is that all the recent developments that are happening, the flexibilities जो कि built in की जा रही हैं, ease of conversion, ease of listing के लिए, ease of business के लिए, I feel that these are positive and they should lead to very positive results. And activity से अभी ये चीजें बेहतर होती हमें नजर आ रही हैं. In the last 2 years, I see there is a lot of positive development, both debt market के साइड पे भी, capital equity market के साइड पे भी, regulations में भी. I mean, थोड़ा सा आप अगर recent चीजें regulatory उसमें देखें, जो changes की गई हैं, जो new offerings के ऊपर काम किया गया है, I think that is all to facilitate the market development. ठीक है, फिर ना अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि दुनिया में कभी भी एपेक्स रेगुलेटर उस जगह नहीं होता जिस जगह पे स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता। दुनिया का कोई स्टॉक एक्सचेंज ऐसा नहीं है यहाँ का रेगुलेटर उस शहर में नहीं है, सिवाय पाकिस्तान के। वी आर द ओनली कंट्री। इंडिया का रेगुलेटर बॉम्बे में बैठा है। थोड़ा सा इसमें बिल्कुल सही आपकी बात हो सकता है। I mean, I'm not looking at the other countries. I really cannot comment on the other countries, but today we say हम टेक्नोलॉजी वाले उसमें बैठे हुए हैं, हम हर जगह कनेक्ट करते हैं, we're all connected, the cloud, the digital world, उसमें geographic boundaries really do not make that much of a difference. हाँ, अब अगेन इस्लामाबाद से हमारे पास कंपनीज आती हैं लिस्ट होने के लिए, KPK से हमें कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया लिस्ट करने के लिए, कराची और लाहौर के अलावा भी कंपनीज हैं जो लिस्ट होना चाहती हैं, वहाँ इन्वेस्टर्स भी हैं. सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक टुडे आई वुड नॉट स्टिक टू ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. अगर आप in terms of close working with the stock exchange and the SECP की बात कर रहे हैं, या on ground companies या listed companies की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी इस्लामाबाद में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लिस्ट हुई हुई हैं स्टॉक एक्सचेंज पे. लाइटर नोट पे एक बात कहता हूँ. देखिए, मेरी तकरीबन 40 साल की प्रैक्टिस है इस प्रोफेशन की. जो गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट हो, उसके बड़े फैसले कभी बोर्ड रूम में नहीं होते. उसके बड़े फैसले हमेशा रात को खाने पे या डिनर पे होते हैं, और वो सोसाइटी डिपेंड करती है वो क्या फैसले कर रही है. आप मेरी बात समझिए, मैंने फर्गूसन को 40 साल चलाया है. हमारे सारे बड़े फैसले बोर्ड रूम से बाहर होते थे. हमेशा गवर्नमेंट के सारे बड़े फैसले हमेशा बोर्ड रूम से बाहर होते हैं. जो जितनी कंपनियों के बड़े फैसले हमेशा बोर्ड रूम से बाहर होते हैं.
जब तक आप वो सोसाइटी क्रिएट नहीं करेंगे जिसमें आपका पर्सनल, ये टेलीकॉम से आपके डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। जब तक आप वो सोसाइटी क्रिएट नहीं करेंगे जिसमें क्लस्टर होगा जो आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क देगा, ये आप हमारी गलतफहमी है कि हम फाइनेंशियल मार्केट का डिसीजन मेकिंग इस्लामाबाद से कर सकते हैं। कराची एक फाइनेंशियल कैपिटल है, जिस तरह बॉम्बे है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, ढाका है, वो यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे माइंड है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो आपके साथ शाम को फैसला करेंगे और फिर आप उसका डिसीजन लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्केट है इसका एक क्लस्टर होता है, वो क्लस्टर जो होता है वो डिसाइड करता है कि ये किस तरह आगे बढ़ना है। इसको जो बोर्ड रूम में फैसला होता है वो तो मैं शाम को लिख के जाता हूँ, मैंने यार सुबह ये कराना है, मगर डिसीजन में जो शहजाद जानता है कि डिसीजन तो मैं पहले कर चुका होता हूँ कि मैंने करना क्या है। मैंने इसलिए, मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ, मेरा 40 साल तजर्बा है इस तरह के बोर्डों में बैठने का। जी शब्बर साहब, टैक्स के फैसले कहाँ होते हैं? एफबीआर में होते हैं? मैं शहजाद साहब आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो एससीसीपी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, चाहे वो कोई चीज हो, बुनियादी फैसले हमेशा इनफॉर्मल जगह पर होते हैं। ये आप मेरी बात जिंदगी में याद रख लीजिएगा। और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब बुनियादी फैसलों के लिए आपको एक मार्केट क्लस्टर चाहिए होता है जो आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन देता है, आपको फीडबैक करता है, आपको बताता है कि फीलिंग क्या है, उसके बेस पर आप डिसीजंस लेते हैं। इन लोगों ने जो दुनिया के और ममालिक हैं, इन्होंने जो अपने एपेक्स रेगुलेटर रखे हुए हैं फाइनेंशियल मार्केट में, वो बेवकूफ नहीं है। इंडिया बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने सेबी को बॉम्बे में रखा हुआ है, न्यूयॉर्क बेवकूफ नहीं है कि न्यूयॉर्क को उन्होंने रखा हुआ है। उसकी लॉजिक ये है कि वो एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर में फाइनेंशियल डिसीजंस की मार्केट डेवलप हो चुकी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लामाबाद से फैसले गलत हो रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको एपेक्स रेगुलेटर, फ्रंट लाइन रेगुलेटर्स, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मैडम को कि मैंने जब ये हैंडबुक को कंपाइल किया था तो वो मेरे ख्याल में, ज्यादा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कोई 500 रुपए की तो होगी कम से कम, एम आई राइट? होगी ना 500 की मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हूँ शहजाद, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए 25 सफे या 30 सफे। अब ये 500 रुपए जो है ना, जब 500 रुपए मेरे होते ना, जब भी मैं कोई इशू रेज करता था ना, मुझे वो कोई निकालते थे कि सर ये वाला कोई सर्कुलर इशू हुआ था 2001 में, फिर वो एक निकाल के ले आते थे कि सर ये देखें 2022 पे। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो इतना मोटा किताब जो मैंने कंपाइल की थी हैंडबुक के नाम पर पीएसएक्स की, ये 500 सफे की किताब को आपको करना चाहिए 100 सफे की किताब, तो फिर आप काम करेंगे, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ। शब्बर साहब, just to add on, आपकी बात बिल्कुल सही है। I think this is something that right now, in fact last couple of months में ये SECP और PSX दोनों इसके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं कि टोटली रेगुलेशंस को रिविजिट किया जाए और देखा जाए इन टोटलिटी। बिकॉज जो आपने कहा ना, बिकॉज देखें, आई थिंक इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। जब भी ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, उसके बाद जब सर्कुलर्स आते हैं वक्तन फवक्तन, as the need or the requirement comes and a circular is issued, after a certain number of years, that all those have to be revisited in totality and a new book or a document should be issued or prepared. So I think that is very valid. That is something हमने different points पे भी point out किया है, and inshallah I think I'm not very hands on the day. आसिफ साहब आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू। जी शहजाद, मैं लाइटर नोट पे एक बात बताऊं, ये मैंने क्यों बनाई किताब, मैडम के पास पड़ी होगी हैंडबुक, ये मैंने इसलिए बनाई, जब भी मैं कोई बात करता था ना तो सेक्रेटरी एक नोटिफिकेशन लेके ले आता था कि यार सर ये है। मैंने कहा यार इस तरह करो, जो भी तुमने इशू किया है ना सब निकाल के ले आओ एक दिन, मुझे जितने भी तुमने जिंदगी में इशू किए सब ले आओ। मैंने उसको एक बाइंड करके दे दिया, यार ये तुम्हारी किताब है। वो जब भी उसे वो बात करो नई कहानी ले आता था, कहीं सर ये भी देखे नहीं हमने किया था। तो मैंने कहा यार मैंने कोई एडिशन नहीं की, मैंने सिर्फ ये किया कि सबको किताब में जमा कर दिया। तो अब होता ही है ना शहजाद, को हमारे मुल्क में हमने चीजों को, रेगुलेशंस को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि एक आम आदमी इसको समझ नहीं पाता। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ, मैं 4 साल डायरेक्टर रहा हूँ, मुझे आप कहेंगे स्टॉक रेगुलेशन मुझे समझ आती है, मैं कहूँगा मुझे नहीं आती। तो अब वो रेगुलेशन को समझना एक मुश्किल काम है। मगर मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ मैडम, आपसे एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, मगर मेरा ख्याल है हम बात करें, हमें करनी चाहिए। जो हमारे मुल्क में बहुत बड़ा इश्यू इस वक्त है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग का, और मेरे हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज में NCCPL, CDC और PSX, ये 3 जगह है जहां डेटा है।
मेरे हिसाब से मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, मगर मुझे मार्केट की इंफॉर्मेशन ये है कि मेरी ट्रांजैक्शन का डेटा मार्केट में अवेलेबल होता है। जो ये परसेप्शन है, आई एम नॉट सेइंग रियलिटी है, मैं नहीं कह रहा। अगर स्टॉक मार्केट में डेटा का लीकेज हो रहा है, अगर हो रहा है, मैं नहीं कह रहा, अगर हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट कभी भी डेवलप नहीं हो सकेगी। और मैं इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि ये डेटा आपने 3 जगह रखा है, सीबीसी, एनसीसीपीएल और पीएसएक्स में। इस डेटे को आप, इसकी सिक्योरिटी के बारे में आप कितने कंफर्टेबल हैं? आर यू कंफर्टेबल कि ये सिक्योर है? आर यू कंफर्टेबल कि ये डेटा मेरी ट्रेडिंग का डेटा शराब के पास नहीं है और शराब की ट्रेडिंग का डेटा आपके पास नहीं है? मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी ये इंफॉर्मेशन कह लें या परसेप्शन ये कह लें, एक परसेप्शन है कि डेटे की लीकेज हो रही है। अगर हो रही है, दैट इज अ वेरी सीरियस थिंग जो फंडामेंटल और स्टॉक एक्सचेंज को खराब करेगी। तो मेरा आपको सजेशन है, मैं नहीं कह रहा कि हो रही है, सजेशन है कि इसको आप बहुत सीरियसली लें कि डेटा किसी भी हाल में किसी जगह से लीक नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड डेटा लीकेज। क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिए, आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस बना दी, मगर आप मुझे बताएं कि कौन बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग में अमल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। शहजाद, मैं 40 साल अपनी एक ऑडिट फर्म में रहा हूं, मैंने कभी जिंदगी में एक शेयर नहीं खरीदा, कभी जिंदगी में शेयर नहीं खरीदा। मगर जो हमारे लोग जो प्रोफेशन में है वो शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। मुझे क्या पता कि उनके पास इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे हो रही है, मुझे नहीं पता। मैं नहीं कहता कोई करता है, बट मुझे ये बताइए कि इनसाइडर ट्रेडिंग को हम कैसे डील कर रहे हैं। ऑल्दो रेगुलेशन मैडम बताएंगी बड़ी अच्छी हैं, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है ये हमें देखनी पड़ेगी। जी, आसिफ साहब का मैं एक पॉइंट लेना चाह रहा हूँ, उस पर काफ़ी देर से खामोश हैं, हमें सुन रहे हैं आसिफ साहब। योर पॉइंट्स ऑन ओवर डॉक्यूमेंटेशन, ओवर रेगुलेशन, डेटा लीकेज, इफ देयर इज एनी, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, एज वेल एज योर क्विक कमेंट और इंटर कंपनी डिविडेंड एज वेल। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब इंटर कंपनी डिविडेंड पे आप एक तरह से डबल टैक्सेशन हो जाता है, तो वो तो एंग्रो के लिए, जैसे शब्बर साहब ने बताया था, वो उस जमाने में लाए थे। तो अब अगर उसको खत्म कर देंगे इंटर कंपनी डिविडेंड को, तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी, उसका क्या होगा फिर? योर क्विक कमेंट्स ऑन दैट एज वेल। Thank you, Shadad. I think number one, this is an excessive regulation, especially the intercorporate dividend one, that needs to be curtailed and reversed immediately. I think what we are doing, we are not creating incentives for documentation and corporatization. We are creating more hurdles for it. That, there's not even double taxation. I would say it's almost a triple taxation from parent to subsidiary to minority interest to shareholder, right? So that needs to be, done away with sooner the better, because it's just not for one group only. I think I'm a proponent of what Shabir Saab was also saying, is that there should be lesser and lesser regulation, and it should be simplified to do business. Right? Doing business, documented one, legal one, transparent one should be incentivized instead of, making it difficult for the corporates to actually come or get dissuaded. So number one on that. Number two, yes, the listing regulations are tough, but they're getting simplified. So what I would like to use this forum and advocate for is कि देखिए public market दुनिया के अंदर जो stock market होती है, now they are receding. लोगों का interest ज़्यादा आ गया है technology की तरफ, startups की तरफ. These are private markets. So I think if the regulator were to, well, they have already done it on the GEM board, but I think we need to see more on this, because a lot of people want to invest in newer kind of business. देखिए आज के 20 साल पहले banking sector was a great sector to invest in. So this still has a good weight in the stock market right now on the index of 20%. Then you have pharmaceutical exploration companies. But people want more excitement in their lives. They want to expose themselves with the new economy. Where is the future going? We don't have a lot of property that way in the technology, in the say biotech or even cybersecurity or renewables. The technologies of tomorrow, we are not really there, but the regulations, if they are simplified, we will see a lot of companies which are worth few $1 million. They can come and raise capital if the regulations are very simplified with it. And I am an absolute proponent of the fact that jitni investigation ho sakti hai, honi chahiye. Insider trading is a big menace in Pakistan and even globally. So we have seen this is happening globally everywhere, but we need to see action from the regulator as well. Maybe or the regulator is sometimes skeptical that if we go public about a lot of insider trading cases, logo ka trust वैसे ही हट जाएगा. Right, but I think the policing needs to be done. So if there are more cases, more revelation, if there is a red flag which is being popped up and there proper investigation and someone is criminalized for it,
for non-political and non-personal reasons, especially on merit. If someone is criminalized, it will be a good thing for the market in the long term, that people will have trust. Yes, the regulator is doing its bit and my money is not going to waste. This is a serious issue which I think from top to bottom, all the investors, चाहे वो retail हो, institutions हो, और आपके corporates हो, they're all worried about the leakages. And it's very difficult to say, but you know the pulse of the market is that many a times that during the evening or even after trading hours, you know, people do worry and hear things. Who's doing what? Who's doing here, right? And people are actually, unfortunately, you know, people seek that information as well कि यार वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. जब तक हमारे mindset investors का ये रहेगा, चाहे वो small ticket हो, even institution हो, तब तक जो है हमारी market grow नहीं कर पाएगी, because at the end of the day it is the retail investor, जो आवाम का पैसा है वो कुचला जाएगा और आपकी economy में और जो है ज़्यादा inequality बढ़ती जाएगी. So because this is a trust business. देखिए आपने मुझे पैसे दिए, मैंने इन्वेस्ट किए, मतलब आई एम अ ब्रोकर, यू इन्वेस्ट थ्रू मी ऑन माय रिसर्च कॉल, and then you say कि this was not a merit based research call, so you lose trust. Once you lose trust or something, तो आपके वो जो है ना the entire paradigm shift happens. मैं आपको छोटी सी बात करके conclude कर दूंगा. If I am using one road और मुझे वहाँ पे मोबाइल चोरी हो जाता है और दूसरे महीने भी वहीं पे मोबाइल चोरी हो जाता है, तो I would not be taking that path anymore, because it was a loss of credibility and the loss of confidentiality and loss of the trust. So I think yes, if I were to give my few cents, data leakages must be investigated if there are there, and serious action should be taken and it should be public, ताकि retailer को बताया जाए कि हम लोग keeping an eye, because it happens globally, it could be happening anywhere. Number two, intercorporate dividend, I think, is excessive regulation. It is a disservice to documentation, and it is only creating more hurdles for adding value to the shareholder. Thirdly, for listing purposes, I think the startups needs to get even more activated, like the regulator point of view say, because we see more funds being raised. देखिए कैपिटल मार्केट का काम होता है पैसे रेज करना. आपको कोई बिजनेस आइडिया है, आप जाए लोगों के पास दरवाजा नहीं खटखटाएं, बैंक्स के पास नहीं जाए, आप स्टॉक मार्केट में अपना प्लान दें. ठीक है, वो क्वालिफाइड इन्वेस्टर के लिए हो कि ये हाई रिस्क है, इधर भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्लान पब्लिक होना चाहिए और इस प्लान के ऊपर आपको एक नए आइडियाज मिलने चाहिए. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. टर्की में जो गेम्स है, यू नो द ऐप गेम्स आर वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और हमारे स्टॉक मार्केट की अगर आप 25-30 कंपनी निकाल दें तो नो वन इज अ बिलियन डॉलर कंपनी. So, if, you know, the world is moving very fast, and we also need to adjust. I would have to commend the regulator. इन्होंने 2 months future, 3 months future introduce करवाया है. अभी call options और put options आने वाले हैं. So, regulator side of things are done. It's the economic growth जो आपकी economy में नजर आने लगी है, profitability में translate करेगी. Then I think investors will start finally trusting the market as well. Shahzad, thank you. Excellent, Asif. I would like to move on another question that is about the overall plan. SECP ने अभी एक recently plan बनाया है, which is called Capital Markets Development Plan and Roadmap 2020 to 2027. So I would like to know the key features from Raida, and then I would like to know the comments both from Shabbir Saab as well as from Asif. जी Raida, क्या इसके key features and plan है? इसके 2020 से 2027 तक का plan है, and उसका रोड मैप क्या होगा? It's basically a detailed plan on what are the steps, as I said, in terms of regulatory framework improvements, new product development, listing के side पे equity, debt, both, debt market development. There are various components of this detailed plan which are broken down into steps that the exchange and the SECP will together look at and bring in new products, new framework improvements, and overall what kind of changes we're looking at. So that's in a very small nutshell, I would say, an outline of the plan, and up till 2027. But having said that, ये सारी चीजें जिनके ऊपर already last 2 years से काम तो शुरू हो चुका है, there are multiple external factors which will play a role. The region, the international markets, Pakistan, how we are responding within Pakistan, how our economy is, is moving and progressing. All that will have an impact on that.
जी क्विक कमेंट आसिफ साहब आपके प्लान के हवाले से 2027 तक का जो प्लान है SECP का। I think, on the face of it, it looks good that, there will be more regulatory insight and they've already given their indication of what they could be doing in next 5 years. But since I'm sitting on the trading desk, I can tell very confidently कि देखिए यहाँ पे लोग जो है ना इतना 5 साल आगे नहीं देख रहे हैं. People are really worried about next 3 months or even 6 months or even until election तक क्या होता है, right? So from that vantage point, economic indicators for next 6 months or even 2 years will do a better job in telling us how the market will react in the long term, unless there is some major external black swan event. Regulatory point of view, I must say that because I worked internationally, if you look at Sri Lanka or if you look at Egypt, our framework is much better. The global investors, Scandinavian ones, and even the Western ones are very comfortable with Pakistani regulatory market, and even in terms of the transparency and the disclosure that we are giving. Right, they don't even see that in other frontier markets. However, I think at the end of the day, what boils down is the corporate profitability. And with more breadth and depth in the market, if there are more companies growing their profitability in dollar terms and real terms, I think the market will then react. And when investors' trust is earned over the next 3 years, we have consistently given positive real interest rate returns, more than interest rates, and then only investors will start coming in. But from regulatory point of view, to be honest, our current structure is good enough for us to embark on a bullish range. But however, I think it's good the regulator is now paying heed to what is being required by the market. But on the other hand, my worries are more on the profitability side and the pulse of the economy. So I think if there is improvement over there, our current regulatory front is more than sufficient, in my opinion, because I'm hearing this from my retail investors. They are more concerned about the valuation being unlocked than new products being launched right now. ठीक है, कमेंट आ गया जी. Shahzad, can I give this response to this question after asking a question from Raida? Raida, ये जो book building है, book building आपके लिए अब हर स्टॉक नए के लिए जरूरी है ना जी? No, every time a lead advisor brings in a company for listing, issuing shares, so at that time it is the decision of the lead advisor and the company whether they want to opt for a fixed price method or a book building. So वो choice between the potential company and the lead advisor होती है. And अगर वो fixed price method से जाना चाहते हैं, वो भी उनका choice होता है. If they opt for book building, that's their choice. देखिए, मैं इसकी ये बात आपको इसलिए कह रहा था कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, वो बुक बिल्डिंग के बाद जो प्राइसेस होती है अवेलेबल होती है उसकी मार्केट में, वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होती. आज मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो वो मेरे लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, तो वो मैं आता ही नहीं हूँ उसके अंदर. जो मैं जिन शेयर्स की बात कर रहा हूँ, जो मेरे ग्रैंडफादर ने लिए थे, वो 10 रुपए पे लिए थे और लेकर भूल गए थे. अब मैं अगर शेयर ही मुझे मिलता ही 100 रुपए का, तो मैं सोचता हूँ दफा करो यार, 100 रुपए का शेयर, 10 रुपए वाला शेयर 100 पे लेने जा रहा हूँ. तो आपका एक नेचुरल कॉन्स्टेंट आ गया है कि बुक बिल्डिंग ने आपकी मार्केट को खराब कर दिया है बेसिकली. और लीड एडवाइजर बुक बिल्डिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं. मेरा नहीं ख्याल कि रिसेंट पास्ट में कोई शेयर बुक बिल्डिंग के बगैर आया है. तो मेरा आपको सजेशन ये है कि ये जरा इसको री एग्जामिन करें कि शेयर प्रीमियम का जो कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्सेप्ट लाके फिक्स प्राइस जो है, उसको अगर हम कुछ जगह पे जरूरी करें तो वो फिर हम एक मार्केट को डेवलप कर सकेंगे. मैं फिर आपको रिट्रेट कर रहा हूँ कि आपको फ्री फ्लोट को बढ़ाना पड़ेगा. बुक बिल्डिंग के अंदर जो स्पेकुलेशन है ना, देखिए आप जो बुक बिल्डिंग करते हैं ना, तो आप ओरिजिनल टाइम से ही स्पेकुलेशन शुरू कर देते हैं. जब शेयर अभी कोट नहीं हुआ, स्टॉक नहीं आया, तो उसके ऊपर उसमें बुक बिल्डिंग में कौन आता है? अगर आप अपनी हिस्ट्री उठा लें तो वही स्टॉक मार्केट के 25 आदमी है जो बुक बिल्डिंग में हिस्सा लेते हैं. एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन आप ग्राउंड रिलेटेड की बात करें ना, कि बुक बिल्डिंग में कौन लोग आते हैं? वही 25, 30, 40 बंदे हैं ना. वो पूरी मार्केट को आप सही बातें करें, बता दें कितने लोग होते हैं बुक बिल्डिंग में. लोग क्या मिले? 50 ले लें, 100 होंगे, चले 100 ही है ना जी. 100 लोग जो हैं वो पाकिस्तान की इनिशियल लिस्टिंग को मैनेज कर रहे हैं ना. उन्होंने पूरी पाकिस्तान में जो एंट्री का गेट है, उस गेट पे बैठे हुए हैं. वो जब वो गेट पे बैठे हैं तो उस 100 में से नीचे लोग कैसे आएंगे? उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये प्राइस इसकी 150 रुपए है.
अब उसके बाद मैं तो 50 पे आऊंगा ना, अगर मैं बाहर से बैठा हूँ। तो ये मेरा कहना है कि मैं ये आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या हैंडीकैप्स हैं जो पता नहीं, आप ज्यादा बेहतर जानती है। मेरे ख्याल में अभी भी आपके मार्केट पार्टिसिपेंट हैं वो 3.5-4 लाख से ज्यादा नहीं होंगे शायद, जहां तक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये 3.5-4 लाख जो हैं ये कब 50 लाख बनेंगे? क्योंकि जो जो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस के अपने शेयर होल्डर शायद 50 लाख हैं इंडिया में। तो पाकिस्तान में वो 3.5 लाख बंदे जो आगे पीछे कर रहे होते हैं। इन 3.5 हमारा प्लान जो है 27 का ये होना चाहिए कि ये 3.5 लाख जो है ये 5 करोड़ हो जाए, या 2 करोड़ हो जाए, या 3 करोड़ हो जाए, या 50 लाख हो जाए। अगर आप ये प्लान बना रहे ये रेगुलेशन को ये कर देंगे या ये कर देंगे, तो वो प्लान नहीं है, वो सिर्फ आप समझे वो तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। हमें ये प्लान बनाना चाहिए कि आज जो हमारा इन्वेस्टर है वो 3 लाख है या 5 लाख है, फॉर आर्गुमेंट सेक, हाउ कम इट बी 50 लाख, हाउ कम इट बी करोड़? इंडिया में मेरे जहां तक मेरा हिसाब मुझे याद पड़ता है, उसको मैंने कैलकुलेट किया था, जहां तक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इंडिया में इस वक्त 3 करोड़ से ऊपर एक्टिव, 3 करोड़ से ज्यादा है, बल्कि 3 करोड़ से ज्यादा एक्टिव शेयर होल्डर रिटेल पीपल हैं जो जिनके पास शेयर्स रखते हैं। तो वाई द नंबर हैज गॉट इन पाकिस्तान है 27 वाला, ये मेरे हिसाब से इसकी जो फंडामेंटल से पहले डिसाइड करें हम हमारा डिजायर क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, कि वो ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर होगा फिर आप एक प्लान बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी कागजी कार्रवाइयां तो बहुत होती है पास में। जी, थैंक यू शब्बर साहब। नहीं ऐसी बात तो कमेंट राइदा जी योर क्विक कमेंट राइदा। अच्छा, बेसिकली एक तो आपकी जो पॉइंट था स्टॉक प्राइसेस का, अगेन एज आई सेड दैट इज ए डिसीजन ऑफ द लीड एडवाइजर एंड द कंपनी। हाउएवर आई विल डेफिनेटली कन्वे आपका जो कंसर्न है टू द टॉप मैनेजमेंट एंड सी हाउ वी कैन relook and review what can be done जो आपके from a small investor perspective है। दूसरा again जो invested in currently listed companies है उनके perspective से भी we are looking at how we can जो existing listing companies है how we can reach out to them and also advise them on stock splits as you said। I mean मैं तो आपको अभी small itemized चीजें बता रही हूँ, overall तो यही है डायरेक्शन हमारा इस capital market plan का कि we go to a large number and the mass number of investors and you see it doesn't happen overnight, it will take a number of years। आप लोग भी जब आपने मार्केट को आपने एज ए डायरेक्टर देखा, आपने रूल बुक बनाई, I think at that time also there were many steps that were taken which were to make the market more transparent। Similarly last 2 years में एक बहुत major addition और change कहने हुआ है in the stock market, जो कि सर्वेलेंस सिस्टम पूरा ऑटोमेटेड हो गया है। नाउ विद दैट सर्वेलेंस सिस्टम वो रियल टाइम में अब ये नहीं होता कि जी एट द एंड ऑफ द मार्केट देखा जाता है कि जी ट्रेड्स क्या हुई व्हाटएवर, वो रियल टाइम में हर चीज मॉनिटर हो रही है और फ्लैग हो रही है और एड्रेस भी हो रही है। सो दिस ह्यूज सर्वेलेंस सिस्टम की इंटीग्रेशन हैज रियली टेकन द मार्केट टू अ डिफरेंट लेवल इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस। तो वो ट्रांसपेरेंसी वाला एस्पेक्ट भी वी फील के ऑब्वियसली इट वोंट हैपन ओवरनाइट बट वी आर ऑलरेडी एक सिस्टम डल गया है, इंटीग्रेट हो गया है ट्रेडिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट थिंग इन स्टेप ये ट्रेडिंग सिस्टम इन इटसेल्फ भी रिवैम्प होगा। in the next couple of weeks we will be inshallah looking at a changeover जो कि कोई 20-25 साल पहले एक कैट्स डेवलप हुआ था इन हाउस, विद टाइम वो उसको अपग्रेड करते रहे, बट देयर इज ऑलवेज अ टाइम एंड अ लाइफ ऑफ ए सिस्टम। सो नाउ टू कम इनटू द 21st century आई वुड से कि हम this was a much need of the hour that we change and bring in a totally new system जिसके अंदर capacity है to bring in new ways of offerings to the market। इसके अलावा I would say that other than the capital market development plan, हम as I said हम अपने brokers और lead consultants को भी upgrade करना चाहते हैं। Now customer upgradation is also needed because you see as a nation we've moved to making the quick buck
वाला प्रोसेस कि जी अब वो कोई ट्रेडर से भी बात करते हैं ना, हमें ट्रेडिंग मेंटालिटी से निकल के हमें इन्वेस्टिंग मेंटालिटी में आना है। ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है व्हिच इज नॉट ओनली एट द ब्रोकरेज लेवल। सी एज आई सेड इनिशियली, ब्रोकर्स हैव ट्रेडर्स, ब्रोकर्स की जो बिजनेस मॉडल्स हैं, अभी ये क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोकरेजेस भी होने वाला है, ठीक है, जो कि वो बन चुके हैं स्लैब्स टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स के, एंड वंस दैट इज इम्प्लीमेंटेड वो उसमें थोड़ा सा बेहतरी आएगी। बिकॉज आज हमारे सारे ब्रोकरेज हाउसेस बहुत कम ऐसे हैं जो कि पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, बिकॉज देयर रेवेन्यू स्ट्रक्चर इज सच कि वो ट्रेड से कमाते हैं, वो पोर्टफोलियो बिल्डिंग से नहीं कमाते। हमारा कस्टमर पोर्टफोलियो बिल्डिंग की फी देने को राजी नहीं है, वो ट्रेड की कमीशन देने को राजी है। मगर आज अगर ब्रोकर ये अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा सा चेंज करता है और बोलता है मैं पोर्टफोलियो एडवाइजरी फी चार्ज करूंगा, आप यकीन करें लोग टिप्स मांगते हैं। बट ये आई थिंक अर्सलान वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू टॉक अबाउट दिस, बट दिस इज अ नीड ऑफ द आवर वेयर हमें अपने ब्रोकरेज हाउसेस की कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी आवाम की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करने की जरूरत है कि हम क्विक वक्त शॉर्ट टर्म व्यू से हट के एक लॉन्ग टर्म व्यू पे आए। आज कितना पैसा बनाया शुड नॉट बी द व्यू, आज कहाँ इन्वेस्ट किया, कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। अभी सबसे छोटी सी चीज है, म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स रिबेट मिलता है, आप यकीन करें उसके अंदर भी लोग डरते हैं जाना टू अवेल दैट टैक्स रिबेट कि भाई अगर मुझे निकालना हुआ तो 2 साल की होल्डिंग पीरियड है। मैडम ऑन अ लाइटर नोट, उसकी वजह है कि आपके सारे इन्वेस्टर मेहमान हैं। आपको समझ नहीं आ रही ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आपके 95% इन्वेस्टर मेहमान है, वो ट्रेडिंग करते हैं। आप वो लोग लाएं जो नॉन मेहमान हो, तो वो कारोबार, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं आपको आप करिए ना, वो एक्चुअली जो बंदा आ रहा है ना, वो खुद भी ट्रेडिंग, देखिए ना, मैं आपको शुरू में बात मैंने की थी, जो बंदे आ रहे हैं ना वो आते ही ट्रेडिंग के लिए हैं। जो मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, उनका वो कहते हैं कि हम ट्रेडिंग के लिए गए। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है, बट फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन वी गो टू स्पीक टू इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आप यकीन करें लास्ट ईयर वी कंडक्टेड मोर देन 145 सेशंस nationwide at educational institutions only. We worked with corporates जिनके salaried investors हैं, because that is where documented income lies, your corporates. मैं आपको मेरी जाना, मैं आपको लाइटर नोट पे खत्म कर दूं अपनी बात। मुझे किसी ने कहा था कि स्टॉक मार्केट जो होता है वो बेटी का घर होता है। बेटी का घर होता है, आप दे के निकलते हो, लेके नहीं निकलते कभी। स्टॉक मार्केट बेटी का घर है, इसमें मेरा जैसा आदमी हमेशा मौज में लॉस से निकलता है। तो ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बेटी का घर है, इसमें आप दे के आते हो, वापस लेके नहीं आते कभी। तो ये परसेप्शन आपको सही करना पड़ेगा। ये बेटी का घर बना हुआ है इस वक्त। जो आम इन्वेस्टर है, आप पूछे, वो सब वो हैं जिन्होंने हाथ जलाए हुए पहले कभी, तो वो देकर निकले हैं। तो ये सही बात उसकी शोभरो ने कही थी कि हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है कि ये सब बेटी का घर है, हम सब हाथ जला के बैठे हैं। तो अब वो आपको ये ऐसा कोई नुस्खा लाना पड़ेगा कि बेटी का घर जो है ना, बेटे का घर बन जाए। वो बेटे का घर नहीं बन पा रहा है, वो अभी बेटी का घर ही है। एक छोटे इन्वेस्टर के लिए ये बेटी का घर है, तो इसको आप बेटे का घर बनाएंगे। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी हमारा पूरा जो कंज्यूमर है वो खुद ही ट्रेडिंग वाला है, उसके पास पोर्टफोलियो का कंसेप्ट ही नहीं है, राइट? उसके पास नहीं है। बट ये कैसे आएगा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, हमें सोचना चाहिए। हम उसी के ऊपर बहुत ठीक ठाक काम कर रहे हैं, एंड सुमरो साहब की टीम, मुख्तलिफ और ब्रोकरेज हाउसेस की टीम्स, सबके साथ हम कर रहे हैं वेयर ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग लेकर आए। और ये अगेन ये 2-3 साल की कहानी है, ये ओवरनाइट नहीं होएगा। हम वेमेन ग्रुप्स में फोकस कर रहे हैं, स्टूडेंट बॉडी पे फोकस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में फोकस कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपसे एक बात पूछना भूल गया। राइता, आप बताइए कि अगर मैं हूँ रिटायरमेंट फंड और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे कोई इंश्योरेंस दे सकती हैं कि अगर मैं सपोज कर, नहीं आप सोचेंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि अगर कोई इंश्योरेंस स्कीम हो
जैसे मेरा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं ट्रस्ट हूँ, मैं रिटायरमेंट फंड के पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो आप मुझे कहेंगे अगर 10 to 20% वॉलेटिलिटी होगी तो मेरा इंश्योरेंस कवर होगा, उसको मैं इंश्योरेंस में कवर कर लूंगा, क्योंकि मुझे एक रिस्क फैक्टर को कवर करना है ना जी। बात समझे, पैसे अवेलेबल है मार्केट में, मगर वो इसलिए नहीं आते कि मुझे रिस्क करने की मेरे पास एपिटाइट नहीं है, क्योंकि मैं उसका ओनर नहीं हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। मेरे पास, मैं 5-6 ट्रस्टों का ट्रस्टी हूँ, मेरे पास एपिटाइट नहीं है, मैं कहते हैं मैं कहाँ से जवाब दूंगा। तो अगर कोई ऐसी स्कीम आ जाए जो इंश्योरेंस करे कि जी आपका वॉलेटिलिटी ऑफ 20% 30% तक इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी और आर्गुमेंट से, तो वो आपके लिए शायद एक मार्केट के लिए बूस्टर हो जाएगा। सोचिएगा जी इसके ऊपर। जी जी नहीं, आई थिंक यू आर राइट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर बैक एंड कवर हुए तो यस, दैट इज अ गुड थॉट टू टेक होम। क्योंकि Yeah, I would like to add one thing on this. What Shabar Saab said on covering the insurance side, I think put option globally used for this. कि if a pension fund is investing in the market and he is buying the put option, तो वो अपनी downside जो है secure कर लेते हैं, 15-20% से ज़्यादा नहीं जाती. So I think risk management perspective से when we have more of these products and the market developing globally, because the underlying thing once again is what we are selling. मैं वही कह रहा हूँ स्वप्न साहब, हमें ना मार्केट को बनाना पड़ेगा मार्केट की फोर्सेस के हिसाब से। मैं बहुत सारे ट्रस्टों में बैठता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मगर मैं डरता हूँ कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, कल को नहीं किया, मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को। तो वो आपको, अगर मुझे रिस्क का कवर आ जाए ना, तो मुझे मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, रिटायरमेंट फंड्स आर रियल इन्वेस्टर्स फॉर एनी मार्केट। वो कभी विड्रॉ नहीं करते, बड़ा पॉइंट होता है तो विड्रॉ करने की। That's what happens globally as well. I think from that perspective, the role of the investment advisor, and we had an asset manager because I worked previously, it's important to diversify your stocks and go for the dividend yielding ones. So once you go for those blue chips which have a history कि वो 10 साल में बेटे के घर साबित हुए, बेटी के घर साबित नहीं हुए, even 20 साल की हिस्ट्री में भी वो बेटे के घर साबित हुए, in your analogy, because they've given consistent dividend yield and capital appreciation. But it's very important that your advisor needs to say कि it should be diversified enough कि अगर एक सेक्टर में नुकसान हो तो दूसरे में आपको प्रॉफिट हो जाए. But there's a long way to go, and I think if macroeconomic conditions are good, because what we are selling in equity markets are the companies, and the companies' profitability will drive the share prices. इस वक्त if the profitability of the companies increases in 5 years, तो ये शेयर प्राइस जो है ना बहुत ज्यादा कर सकती है. But of course then there are economic things that we always have to look at when we are taking any investment decision. But from risk management perspective, if put options are launched quickly rather, so I think this will give us very good downside protection. Gee, I think you're right. We are actually in the process of. You also know that we're in the process of bringing such new products to the market, ताकि options available हो. Because today, as an investor, एक normal investor को retirement के लिए वो life insurance policy ले रहे होते हैं. And as you said again, another thing, KG, there are various sectors and various companies which have given you long-term dividends consistently, and that is what the foreign investors also look at. I've personally met quite a few fund managers who actually have claimed the Pakistan stock market, in terms of its robustness, in terms of its structure, is one of the best markets. जो T+2 settlement का हमारा ऑप्शन है, ये सारी चीजें बहुत इन लोग के लिए कॉन्फिडेंस वो होती हैं, बिल्डिंग elements है. But the overall economic conditions and the ups and downs, that also creates a question mark when they are considering Pakistan as the destination to invest. So in fact, शुरू में शब्बीर साहब ने कहा एक ही होना चाहिए, but मुझे on the contrary different feeling और different feedback मिला from foreign investors that the fact that हमारी जो market है, हमारी clearing and settlement है और हमारी depository है, they are independent and seamless. Yet seamless is a positive which gives them the confidence in coming to the market here. With that note, Aida, thank you, Shabbir Saab, thank you, Asif Saab. We have already exceeded time. 17 मिनट हमें मजीद हो गए हैं. I am seeing कि अभी भी 500 लोग लाइव हमें देख रहे हैं. आज की पार्टिसिपेशन को अराउंड मोर देन 30,000 रही. So that demands कि हम इसका सीरीज 2 सेशन 2 प्लान करें और उसमें कुछ और स्पीकर्स को बुलाएं
और शब्बर साहब, हमें आपके पास बहुत कुछ है, हमें आपसे बहुत कुछ अभी भी सीखना है। और जो आपके वो जो वन लाइनर्स होते हैं, वन लाइनर्स नहीं, अच्छा, वन लाइनर्स पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं फेसबुक पे, मैं आपको अलग से भी भेजूंगा, एंड दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड, लॉज एंड रेगुलेशंस काफी डिटेल और ओवर रेगुलेटेड हैं। इस पे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, कोई मोर देन 250 कमेंट्स से ज्यादा आए हैं अभी इस वक्त। यार मैं तो अकाउंट पढ़ते ही नहीं है, मैंने अकाउंट पढ़ना छोड़ दिया यार, कितने पढ़े जाते 500 सफे। जी जी, बिल्कुल सही है। विद दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी अगर मैंने कोई गलत बात की, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो कहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, not at all. Your feedback is always most welcome. उसको बेसिकली आप बोलते बहुत कैंडिडली हैं, बट आई फील दैट उसको हमें प्रॉपर उसमें ट्रांसलेट करके, दिस इज वेरी हेल्पफुल ऑल्सो व्हेन वी लुक एट आवरसेल्व्स क्रिटिकली, एंड देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. वी नेवर इन अ यूटोपियन स्टेट, रियली. थैंक यू वेरी मच। एक काम करते हैं, आज का जो सेशन हुआ उसके जो की पॉइंट्स हैं, आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। आप उसको एक नजर देख के रिव्यू कर लें, एंड देन उसका एक प्रेस रिलीज निकाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आसिफ साहब। दो आसिफ साहब, आपको टाइम थोड़ा कम मिला, बट आई एम सॉरी अबाउट दैट, अगले सेशन में इसको कवर अप करते हैं। थैंक यू रायदा, और आज हमारी कोलैबोरेशन रही PSX के साथ, उसके लिए भी शुक्रिया। ACCA का बहुत बहुत शुक्रिया, सजीद का शुक्रिया, इमरान अहमद, अनफॉर्चुनेटली आज मॉडरेट करना था इमरान अहमद ने, बट उनका इंटरनेट के कनेक्टिविटी के काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, सो ही कुडंट बी देयर। थैंक यू इमरान एंड हिज टीम, जो कि एंग्रो की टीम भी पीछे काम कर रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया। विद दैट नोट, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज.